नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार पासवान, वैज्ञानिक, शैल उत्खनन अभियांत्रिकी विभाग आज के इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के तीसरे दिवस पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संजीव कुमार जी उपस्थित है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ उपस्थित हुए। सर, आपका जी सर, कुमार राजीव सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर, सभागार में उपस्थित संस्थान के वरिष्ठ सदस्यगण, सहकर्मी वृंद, विभिन्न स्कूल कॉलेजों से आए हुए छात्र छात्राएं एवं अध्यापकगण, वेब के माध्यम से जुड़े हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं इस संस्थान के सदस्यगण एवं सभी सुधीजनों को एवं विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्रों एवं अध्यापकों को एवं मीडिया बंधुओं का मैं समस्त सिंपल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हम अपने अतिथियों का स्वागत पुस्तक भेंट कर करते हैं। मैं अपने वरिष्ठतम मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जे.के. पांडे सर से अनुरोध करता हूं कि श्री कुमार राजीव जी का पुस्तक भेंट कर सम्मान एवं स्वागत करें। धन्यवाद सर। आज इस विज्ञान साप्ताहिक कार्यक्रम का विज्ञान सर्वत्र पुज्यते का तीसरा दिवस है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी दिग्घोषक से सर का संक्षिप्त परिचय के लिए आग्रह करता हूँ। Good morning. It is my proud privilege to introduce the first speaker of the day, Shri Kumar Ranjeev ji, to the audience. Shri Kumar Ranjeev is HOD of the Environment Department as Chief Manager Mining of BCCL. He is a mining engineer by qualification and practicing environmental manager. He is heading the Environment Department of BCCL for more than 2 years. He is graduate in mining engineering in 1993 from IIT-ISM Dhanbad, and he is holder of first class mines manager certificate of competency and has worked in both open cast and underground mines. He along with his team obtained environmental clearances of mines and washeries of BCCL on cluster concept. He has interline PM10 analyzers. He has fast-tracked eco-park development for better environmental management. For environmental awareness, he initiated Paryavaran Darpan and is continuing as editor of the same. His present responsibility includes environmental management of BCCL, forestry management, greening activities, sustainable development, mine closure plan implementation, and he is also serving as member of the Jharia Rehabilitation and Development Authority Board.
I now request Sri Kumar Ranjeev ji to kindly get on the dais and start his lecture. Good morning to all. There are dignitaries and my colleagues at Simper. Basically, we all are of scientific community, so I consider them our colleagues and teachers and students. I think many of the students might have visited our sites and interacted with us in our ecotourism program. So I think I will mix up both Hindi and English as per your requirement. And you can ask anything, anytime with me, so that the interaction can be meaningful. And you must know your city, your economy, your society in a better way, and we are here to serve the purpose and ignite the scientific mind within you. मैं चाहता हूं कि आप सब एक साइंटिस्ट की तरह सोचें और अपने समस्याओं को ऑब्जेक्टिवली देखें, उनका समाधान खोजें और देश की प्रगति में हाथ बढ़ाएं। मैं शुरुआत करता हूं our presentation, Sustainable Developmental Effort of BCCL Using Modern Science and Technology. सबसे पहले बात आती है जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा COP26 का आपने सुना होगा, उसमें काफी ये जिक्र हुआ कोल फेज आउट और कोल फेज डाउन। जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका कहना था कि फॉसिल फ्यूल में उन्होंने कोल को सिंगल आउट किया और कहा कि इसे आप फेज आउट करें, आप इसको हटा दें और बाकी एनर्जी सोर्सेस से भी काम करें। अब इसमें ये देखिए कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है। अगर आप चाइना का डेवलपमेंट देखें तो चाइना ने कैसे किया है, उन्होंने अपना कोल आउटपुट 3.5 बिलियन तक बढ़ा दिया, 3.5 बिलियन पर ईयर। हम लोग अभी 1 बिलियन भी नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने इतनी स्पीड से अपना कोल का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया कि विद इन 30 इयर्स उनका सारा रिजर्व खत्म हो सकता था। लेकिन उसका असर ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए एनर्जी और जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है वो रातों रात नहीं डेवलप होंगे, उनको डेवलप करने में समय लगेगा और एक बैलेंस्ड वे लेके चलना होगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने इसे नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो ऑलरेडी इस फेज को पार कर चुके हैं, वो कोल का उन्होंने जमकर उपयोग किया है और आज वो उस स्टेज पर पहुंचे हैं और हमें वो उस स्टेज पर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम फेज आउट नहीं करेंगे, हम फेज डाउन करेंगे। और फेज डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें हम बीसीसीएल भी एक पार्टनर है। उसके तहत हम लोग सोलर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपको याद होगा कि COP21 में ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया अपनी एनर्जी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगा। आज के डेट में अगर आप देखें, आप नवंबर 21 का आप डाटा देखें तो 392 गीगावाट जो एनर्जी हमारा जनरेशन है उसमें 157 नॉन फॉसिल फ्यूल है।
आई थिंक सोलर 48 है, बायो मास का 10 है, हाइडल लार्ज का 46, स्मॉल का 4, और इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हम लोग आज जो हमें 2030 में अचीव करना था वो हमने आज अचीव कर लिया। हाँ, बशर्ते इसको हम मेंटेन कर पाए आगे भी 2030 तक। इस बीच में कॉप 26 आ गया। अब इसकी पॉइंट्स को आप देखें, इसमें कहा गया है कि हमें अपने एनर्जी का रिक्वायरमेंट का 50% नॉन फॉसिल से अचीव करना है। अब इसके दूसरा एस्पेक्ट देखिए, इसमें यह भी कहा गया है कि हम अपने सोलर पावर जनरेशन को 500 गीगावाट तक ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। अगर हम 500 गीगावाट सोलर ले जा रहे हैं, यानी कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए 500 गीगावाट से भी अचीव करना है। यानी अभी हमें अपना जो कोल का जनरेशन है और कोल से जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसे डबल करने की डबल से भी ज्यादा की जरूरत है। तो इसे हमें आगे बढ़ाना ही है, और हमें अगर डेवलप होना है तो इसे करना होगा। लेकिन करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होती है जिससे कि हम एक विन विन सिचुएशन के साथ काम करें। कोल कंपनीज भी आगे बढ़े, इसके से एसोसिएटेड लोग भी आगे बढ़े, समाज एक आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े, और एनवायरनमेंट पे इसका इल इफेक्ट ना हो। और इसमें केवल कोल कंपनी की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम सब की जिम्मेवारी है, सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी है। हमें अपनी आदतें भी बदलनी होगी, हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देना होगा। अगर हम अपने एनर्जी का वेस्टेज रोक पाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी होगी, और उन्हें अगर ज्यादा नहीं जनरेट करनी होगी तो उतना ज्यादा हमें कोल भी नहीं देना पड़ेगा। अगर उतना कोल नहीं होगा तो बाकी आप ये साइकिल समझिए। दूसरा है कि जो कोल कंपनीज काम कर रही है उसका आपको ये समझना होगा कि उनका ऑपरेशन कैसे होता है। इसमें प्राइम चीज है लैंड, और अगर इंक्रोचमेंट फ्री लैंड नहीं मिलेगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकती है, और आगे नहीं बढ़ेंगी और एक जगह अगर डिप जाएंगी तो उसका एनवायरनमेंट में इल इफेक्ट पड़ता है। एक सिस्टमेटिक अगर चलते रहता है तो क्या होता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे उसको बैकफिल करते जाते हैं, उसको रिक्लेम करते जाते हैं, और उसका अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपका अगर वाटर पे देखेंगे तो वो एक्वीफर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है। आप अगर ये देखेंगे कि उसका फर्टिलिटी अगर देखेंगे तो जो उसको न्यूट्रिएंट्स जो नीचे दबे हुए थे उससे भी हमने ऊपर लाके वो उसको मिक्स कर दिया है, तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ गई है। हाँ, हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है, ये सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमें करनी होंगी, और हमें मिलजुल के अपनी कंट्री के नीड को पूरा करना है। आप भी आगे जो स्टूडेंट्स हैं आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट फील्ड में जाएंगे, कुछ हमारे फील्ड में भी आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस हिसाब से सोचेंगे, और मैं अब प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। अगर आप ये देखेंगे हिस्ट्री, मैंने कुछ हिस्ट्री बुक्स से निकाली है। ये 1917 में एक रिपोर्ट भेजी गई थी इंडिया के गवर्नर जनरल की ओर से ब्रिटिश हेडक्वार्टर को, तो उससे मैंने कुछ निकाला है। उसमें आप देखेंगे कि उस समय इंडिया का कोल चीपेस्ट हुआ करता था, और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इंडिया में कोल माइनिंग का तो अराउंड 770 के आसपास
रानीगंज कोल फील्ड में शुरुआत की गई, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं रहा तो बंद हो गया। फिर 1870 के आसपास उधर चालू हुआ, उसके बाद फिर 1890 के आसपास जब रेलवे लाइन एक्सटेंड हुई, उस समय झरिया कोल फील्ड में पड़ा। और ये अगर आप 1917 तक आते आते देखेंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। आप उनका अगर नाम भी देखेंगे तो उनका स्पेलिंग से आप देखेंगे कि वो कैसे प्रोनाउंस करते थे, रानीगंज, झेरिया और ये गिरिडीह का जो एरियाज है। अब जब माइनिंग स्टार्ट हुई उस समय एक नई लर्निंग थी। कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर ही देखेंगे तो पहले मैनुअल लेबर था, उसके बाद रिपर आए, हल जिसमें जानवरों को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ट्रैक्टर आए, और उसके बाद तरह तरह की गवर्नमेंट ने भी उस पर ध्यान देना शुरू किया और उस तरह तरह के सपोर्ट आए। अगर माइनिंग भी देखें तो ये एक प्रिमिटिव तरीके से स्टार्ट हुआ। अगर आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो कैसे उसमें बच्चों और लेट के भी जाके और बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से निकाला जाता था, जिसमें कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो वो सिस्टम था। और अगर आप देखेंगे तो डीजीएमएस का भी जो बना वो 20वीं सदी में जाके बना, 1905 के आसपास बना था। तो उस समय कोई रेगुलेशन नहीं था। ये जो प्राइवेट ओनर थे जमींदार से जमीन लेते थे और उसके नीचे से खुदाई करना शुरू करते थे, और उसके लिए चूंकि ये मैन पावर इंटेंसिव था, लोगों को लाके उसी जमीन पे बसाया गया, जिसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो शैलो डेप्थ पे अनसाइंटिफिक माइनिंग की गई, तो उसकी वजह से ढेर सारे अनस्टेबल एरिया क्रिएट हो गए, और जो कोल की स्पॉन्टेनियस हीटिंग की प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से उसमें आग लगनी शुरू हुई। आप ये पूछेंगे कि ये आग लगी, ये कैसे होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग? तो ये मैं बताता हूं कि आप जैसे शैलो डेप्थ पे काम कर रहे हैं, ढेर सारी कैविटी क्रिएट हो गई, आपने गैलरीज ड्राइव की तो बीच बीच में कैविटी क्रिएट हो गई, और उन्हें ज्यादा कोयला लेना है तो वो उसका गैलरी का चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो जो पिलर पे सपोर्ट रहता है वो उतना नहीं कर पाता है, क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं। अब आप देखते हैं कि बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है दिन में, सुबह से रात तक आप देखेंगे तो चेंज होता है। अब उस चेंज से थोड़ा बहुत एयर मूव होता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन उसे मिल जाता है, और जो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग की प्रॉपर्टी होती है तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और उसके बाद ऐसा स्थिति हो जाएगा कि एक सर्किट बन जाएगा दो क्रैक्स के थ्रू, कि एक ओर से वो ऑक्सीजन ले रहा है, दूसरी ओर से कार्बन डाइऑक्साइड इजेक्ट कर रहा है, और वो फुल फ्लेज्ड फायर हो जाएगी। अगर वो किसी माइन से कनेक्टेड हो जाए तो क्या होता है कि माइन में हम लोग वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन फैन लगाते हैं। अब वो फैन अगर सक करता है तो ये फायर माइन की ओर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। माइन में भले ही हम आइसोलेशन स्टॉपिंग लगा दें, मतलब ब्रिक वर्क और कंक्रीट से हम लोग सील कर देते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 100% कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो फुल प्रूफ हो सकता है। तो ये कुछ न कुछ फायर आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब इसका एक ये तरीका है कि ये जो शैलो डेप्थ पे है इनको हमें एक्सकेवेट आउट कर दें, क्योंकि देखिए फायर ट्रायंगल में जो 3 पार्ट होते हैं, एक फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है और हीट होता है। हमने हीट हटा के देखा, ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्ट कर देकर देखा, ये 2 तरीका है, लेकिन चूंकि ये शैलो डेप्थ पे है और क्रैक्स है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हमने इतने सालों का अपना जो एक्सपीरियंस देखा है, तो अल्टीमेट है कि आप एनर्जी सोर्स को ही हटा दें। साइलेंट कर दो। हाँ, तो मैं अभी वापस आता हूं। ये जो फायर डेवलप हुए हैं और अनस्टेबल हुए डेवलप हुए,
तो स्थिति बिगड़ने लगी और मैं आगे आपको उसका दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसका भी आया, लेकिन इसकी वजह से लैंड पे काफी असर पड़ा। और अभी आप लोग जैसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे या अगल बगल देखते भी होंगे कि कई जगह क्रैक्स होते हैं, लोग धंस जाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल एरिया से लोग अभी हटे नहीं हैं, इसलिए ये डर बना रहता है। और ये फायर की वजह से सब्सिडेंस भी, जैसे जैसे वो फायर बढ़ेगा वो कोल को जला देगा, सपोर्ट सिस्टम खत्म होगा तो जमीन धंसेगी। ये इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया 1972-73 में। और उस समय जो 398 माइंस थे उनको हमने एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए उनको अमलगमेट करना शुरू किया। तो उस समय हम लोगों ने इसे 102 माइन में किया। और ये मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि ह्यूज रिजर्व है आज भी। ये मैं केवल बैलेंस दिखा रहा हूं, अभी तक का टोटल मैं नहीं दिखा रहा हूं। टोटल कोल रिजर्व ऑफ BCCL, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हमारे पोटेंशियल कितना है। और अगर ये पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो BCCL केवल नहीं बढ़ेगी, ये धनबाद बढ़ेगा, क्योंकि BCCL का अस्तित्व धनबाद के बिना नहीं है और धनबाद का अस्तित्व BCCL के बिना नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसलिए हमें उसी तरह सोचना होगा। ये मैं दिखा रहा हूं कि कैसे ये हम काम कर रहे हैं। जहां फायर है वो फायर को हम लोग सीधे सीधे एक्सकेवेट कर रहे हैं। जहां टेक्नोलॉजी की जगह है वहां हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। आप ओपन कास्ट में हमारा देख रहे हैं, ये ब्लॉक टूप में फायर हटा के हम वहां ड्रैग लाइन से एक्सकेवेशन कर रहे हैं। मुनिडी में आप ये देख रहे हैं कि लॉन्ग वॉल सपोर्ट के में पावर सपोर्ट के साथ और शेयरर से हम एक्सकेवेट कर रहे हैं। यहाँ लोगों के आने जाने के लिए हम लोगों ने मोनोरेल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। और अगर आप हमारे कोल इंडिया की वेबसाइट पे देख जाएंगे तो वहां आपको एक ये टेक्नोलॉजिकल रोड मैप मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि हम आगे का क्या क्या प्लानिंग किए हुए हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं। हमारा जो कोल है वो कोकिंग कोल है और हमारा एक रेवेन्यू का बड़ा पोर्शन कुकिंग कोल इंपोर्ट में जाता है। क्योंकि अगर कुकिंग कोल का रिजर्व देखें तो मैक्सिमम हमारे पास है और कुछ CCL के पास है, अदरवाइज हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और स्टील जनरेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए कुकिंग कोल जरूरी है। या तो हम उत्पादन करके दें या इंपोर्ट करें, तो हमें इसकी सप्लाई बढ़ानी है। और जो स्टील प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें ऐश कंटेंट घटाना होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोकिंग कोल को वॉशिंग करते हैं, उसमें से जो 18% से नीचे 14% या 17% ऐश तक हम ले जाके उसको स्टील प्लांट को दे देते हैं ताकि वो कोकिंग कोल के रूप में इस्तेमाल करें। और जो उसका रेसिडुअल पोर्शन होता है उसमें एनर्जी वैल्यू होती है, उससे हम देते हैं पावर प्लांट को ताकि उसको पावर जनरेट करे। यानी कुछ वेस्ट नहीं होता है, उसके दोनों कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की हमारी कई वाशरियां हैं। ये मैं अभी जो नई मधुबन वाशरी बन रही है उसका मैं दिखा रहा हूँ। दहीबाड़ी वाशरी है, पाथरडी वाशरी है, मुनेडी वाशरी है। मुनेडी में एक और हम ला रहे हैं, पाथरडी में एक और ला रहे हैं, दुग्धा में हमारी वाशरी है। तो ये इस तरह की आपको बहुत सारी वाशरीज मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा था मास्टर प्लान का। तो ये मास्टर प्लान एक बनाया गया था यहाँ के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ऐसे फायर और सब्सिडेंस अफेक्टेड लोगों एरियाज में रहते हैं उनको प्रॉपरली सेफली उनको रीलोकेट किया जाए। और इसमें ह्यूमन फेस रखते हुए जो इंक्रोचर थे उनको भी
हम लोगों ने घर देने का प्रोविजन किया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कराया 2009 में। उसके बाद 2 साल में इनका सर्वे होना था और उसके बाद 10 साल में ये एग्जीक्यूट करना था। और लोगों के हटने के बाद फायर एक्सकेवेशन की जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन आज तक ये लोगों को टोटल हटाया नहीं जा सका। हम लोग ने JRDA के एसोसिएशन में बहुत सारे बनाए भी, घर बनाए भी, लेकिन लोग शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। आधे अभी भी घर बन के तैयार पड़े हुए हैं, लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सेफर प्लेसेस पे जाएं और हम उस फायर को एक्सकेवेट आउट करके या अनस्टेबल एरिया को लिक्विडेट करके उसे एक सेफ जगह बना दें ताकि धनबाद उसके इस्तेमाल कर सके फ्यूचर में। और अगर वो एक्सकेवेट अगर वो फायर एरिया है और उसको एक्सकेवेट नहीं किया जाएगा तो ये फायर और एरियाज को अपने गिरफ्त में ले लेगा। तो इसमें सबको अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सब लोग सहयोग करें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इस पर देखने की मिली कि जो ये प्रोविजन किए गए घर के और ये सारे प्रोविजन किए गए, तो सर्वे में जो इनिशियल नंबर्स थे फैमिली के, उससे बहुत ज्यादा लोग आके और बस गए इस बीच में, और वो कट ऑफ डेट का उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्योंकि जो ये मास्टर प्लान बना था तो उस समय जो लोग थे उस हिसाब से बना था, और उसके बाद और लोग आके बस गए, तो अब उस हिसाब से प्रोविजन करने में भी दिक्कत होने लगी। तो अब फिर उसको नए सिरे से अभी देखा जा रहा है और उसको गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रही है, उसमें कुछ और रिवीजन भी होगा, तो वो अभी गवर्नमेंट के पास अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन हम लोग अपनी ओर से फायर को एक्सकेवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग अपनी ओर से भी जो इंक्रोचर है उसको घर तो नहीं, लेकिन हम लोग एक लमसम पे अमाउंट देते हैं कि आप सेफली अपनी दूसरी जगह जाके बस जाइए। तो वो आज के डेट में अराउंड 20,000 है कि आप जाके अपना, बाकी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जगह खाली कर दीजिए ताकि हम ये फायर लिक्विडेट करें, एक्सकेवेट आउट कर सकें। और आप ये देखेंगे कि ये फायर जो एक्सकेवेट करते हैं तो ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए हैं। फायर को वाटर का काफी इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सकेवेट आउट करते हैं, उसके बाद उस पर सॉइल डाल के, जहाँ सॉइल अवेलेबल है, क्योंकि बहुत जगह जहाँ फायर है तो सॉइल जल भी जाता है, लेकिन जहाँ भी हमें सॉइल मिलता है तो उसको सॉइल को ले करते हैं, उस पे ग्रास लाते हैं। तो ग्रास लाने से क्या होता है कि वो एक माइक्रोब्स का स्टोर हाउस हो जाता है, और उसके बाद अगर आप कोई भी वेजिटेशन उगाना चाहें तो वो आसानी से आ जाता है। उसके बाद उस हम वेजिटेशन उगाते हैं और मतलब 3 टियर प्लांटेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद धनबाद की पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पार्क में भी डेवलप करते हैं। जैसे आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं, ये गोकुल पार्क की पिक्चर है। ये तीनों ग्रास डेवलप, ये जैसे सॉइल स्प्रेडिंग, ग्रास डेवलपमेंट और ये जो पार्क है, ये सब गोकुल पार्क है। अब आप लोग गए भी होंगे और नहीं गए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाएं। हाँ, मैं जो बता रहा था 1895 के आसपास झरिया कोलफील्ड में माइनिंग स्टार्ट हुई, लेकिन ये फायर तुरंत ही आ गई। 1916 का जो फर्स्ट रिकॉर्डेड फायर है, हो सकता है उसके पहले भी फायर रहा हो लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन 1916 में पहला फायर रिकॉर्ड हुआ था। 1930 में खास झरिया और गोल्डन झरिया कोलैप्स कर गए फायर की वजह से, और इससे काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था। 1934 में नेपाल बिहार अर्थक्वेक एक मेजर अर्थक्वेक था। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका बिहार पे बहुत गहरा असर पड़ा था, बहुत डैमेज किया था इसने। तो उसका असर यहाँ भी पड़ा था, और उसका असर ये हुआ कि अगले 4 साल में झरिया कोलफील्ड की 1/3 कोलेरिस फायर अफेक्टेड हो गई थी। अब उसको डील करने के लिए हम लोगों ने बहुत तरह की एक्टिविटीज किए, ब्लैंकेटिंग किया, उसके ऊपर वाटर पूल बनाया, स्टोइंग किया, नाइट्रोजन फ्लशिंग किया, ये उसके बाद प्लांटेशन भी किया। लेकिन अगर नीचे फायर है
तो ये सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही डालते हैं, लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करते हैं। आज से करीब 12 साल पहले तक मैं एक कोलेरी में था, अलकुशा कोलेरी, जिसमें ये टीम भी काम की हुई है। तो वहां पर फायर हुआ था, एकदम आप समझ सकते हैं एक कुएं की तरह डेवलप हो गया था, वेल जैसा। उसको हमने फिल किया, उसके ऊपर वाटर पूल बनाया, वेजिटेशन उस पर ग्रासिंग किया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहा। माइन के अंदर भी हमने प्रेशर बैलेंसिंग टेक्निक अपनाई थी। ये सारी चीजें होते हुए भी वो फायर से हम उस माइन को बचा नहीं पाए और वो फायर बढ़ते रहा। फाइनली आज के डेट में हमने उस एरिया को एक्सकेवेट आउट करके और उस पे उसको फिर बैकफिल किया है, उस पे सॉइल अभी स्प्रेड कर रहे हैं और होपफुली इस साल वो उस पे पेड़ लगा के उसको फिर से हरा भरा कर देंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहती है। और इसमें मैं कुछ खास एरिया में ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये कुजमा का एरिया है, ये फायर पे हमने अच्छा प्लांटेशन कर दिया था, लेकिन आज के डेट में ये आपको प्लांटेशन नहीं दिखेगा, फायर ने इसको खत्म कर दिया है। इस तरह का आपको सेंद्रा बांसुरा में भी रेलवे लाइन के बगल में हमने काफी प्लांटेशन किया था, लेकिन फायर की वजह से वो भी खत्म हो गया। तो ये है कि देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं ग्रीनरी बढ़ाने का, लेकिन जब तक हमको फायर एक्सकेवेट करने में पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको खत्म नहीं कर सकते, और ये हमें मिलजुल के करना है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है, हमारा कंपनी का ही सस्टेनेबिलिटी नहीं, इस समाज की भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, इसमें एक है ये स्ट्रेटेजिक माइनिंग टू लिक्विडेट फायर एंड अदर डेंजर। हम लोग वैसे जगह चुन चुन के अभी एक्सकेवेट कर रहे हैं ताकि ऊपरी सीम में जो फायर है और अनस्टेबल एरिया है उसको हम लिक्विडेट कर दें, उसको बैकफिल करके उस पर प्लांटेशन कर दें, और जो नीचे के सीम है उसमें मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड लगा के उसमें हम काम कर सके। तो वो हमने अप्रोच किया है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन फॉर फायर एंड सब्सिडेंस अफेक्टेड एरियाज, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ माइंड आउट एरियाज, उसके बाद है सरप्लस माइन वाटर यूटिलाइजेशन। तो हमारे आप देखेंगे कि जगह जगह हमारे प्रेशर फिल्टर लगे हुए हैं, और एक सिम्फर के सहयोग से हमारा पीवी प्रोजेक्ट में 4000 लीटर पर आवर का एक प्लांट भी है जो आपको आरओ स्टैंडर्ड का वाटर देता है। वो भी हमारे पास टेक्निक से है, और भी स्लो सैंड फिल्टर और फास्ट सैंड फिल्टर के भी कई हमारे ये फिल्टर प्लांट्स हैं जो कि माइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। वो हमारे कॉलोनीज में भी जा रहा है, आसपास की लोकेलिटी में भी जा रहा है। और हमने झारखंड गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू किया है कि वो हमारे पानी को लेकर और जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं धनबाद की उसमें यूटिलाइज करें, क्योंकि आप ये अगर पूरे ये धनबाद का वाटर रिक्वायरमेंट एज पर पॉपुलेशन अगर आप एग्जामिन करेंगे, और जो हमारे सोर्सेज है, मैथन है या बाकी जो सोर्सेज है, तोपचाची है, तो ये सब सोर्सेज को आप जोड़ेंगे तो आप इसे सफिशिएंट नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों की ये इनिशिएटिव है कि हमारे माइन वाटर को लेके और वो उसको फिल्टर अपने सिस्टम से फिल्टर करके सप्लाई करे लोगों को। तो ये भी हमने लिया है। उसके बाद है कि ये जो ढेर सारे माइंस थी, छोटे छोटे माइंस है, अगर ये पीस मिल में हम करेंगे तो ये प्रॉपर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट नहीं होगा। तब हम लोगों ने 2010 में ये इनिशिएट किया, और अब ये फुली इम्प्लीमेंटेड है। हमने क्लस्टर्स बनाए कि एक तरह के जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर, मान लीजिए कि 5-6 माइन के एक तरह के हैं, आसपास से सटे हुए हैं, और एक तरह के माइन है, तो उनको लेके जिनका एक साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो सकता है, तो हमने क्लस्टर्स बनाए और उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे आप देखेंगे कि रिवर के बगल में जो डीप सीटेड कोल है उसमें मीथेन ट्रैप्ड रह जाता है, बाकी जो शैलो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे
निकल जाता है। तो आप जो शैलो डेप्थ पे माइंस देखेंगे उसमें वो हम लोग जैसे माइंस में डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 कहते हैं। तो डिग्री 1 है जिसमें कि मीथेन नहीं मिलता है या बहुत मामूली मिलता है, डिग्री 2 उससे थोड़ा सा ज्यादा है और डिग्री 3 ज्यादा है। तो ये रिवर के बगल वाले डिग्री 3 ज्यादा होते हैं, इस वजह से क्योंकि वो स्केप नहीं कर पाता है मीथेन। तो हमारे जैसे मोनिडी है, कपूरिया है, इस सब में काफी पोटेंशियल है मीथेन का, और वो डिग्री 3 माइन से काफी मीथेन है। उसको लेने के लिए हम लोगों ने अपना सीबीएम यूटिलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट अवार्ड भी हो गया है और उसका एक्सप्लोरेशन वर्क चल रहा है। इसके अलावा हमारे साउथ में अगर आप देखेंगे, मैं जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पर्वतपुर एरिया में ओएनजीसी ने काम स्टार्ट भी कर दिया है, और हमारे 3 ब्लॉक हैं, तीनों पे हम आएंगे आपके पास। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, जैसे प्लांटेशन एक्टिविटीज के बारे में भी हमने ट्रेनिंग बहुत सारी कराई है, और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पे भी हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है ट्रेनिंग। और उसके अलावा है सीएसआर एक्टिविटीज, जैसे आपने ये देखा कि अ, अभी जैसे कोविड जैसे ही आया, बाकी तो हमारी जो नॉर्मल सीएसआर एक्टिविटीज हैं वो तो हमारी चालू ही रही। हमने अपने माइंड के स्प्रिंकलर को भी सारे लगा दिए थे रेजिडेंशियल एरिया में सैनिटाइजेशन में, और नॉर्मल जो है कि वाटर प्रोविजन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन सब एक्टिविटी में तो हम लोग ऑलरेडी हैं। तो ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसमें हम जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद से हमने करेक्टिव मेजर्स लिए, और हमारा बीसीसीएल का खास तौर पर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और क्लस्टर कॉन्सेप्ट का पायनियरिंग इफेक्ट की वजह से ये एमओएफ भी रिकॉग्नाइज करता है, बाकी कंपनीज भी रिकॉग्नाइज करती हैं। और इसी वजह से एमओएफ ने एक बार ये कहा कि आप बहुत सारे कोल कंपनीज को सेंसिटाइज कीजिए, ताकि ये एक सस्टेनेबल माइनिंग करने में सब लोग आगे आए। हमारे एफर्ट से ये फायर भी काफी घटा है, और हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है अगर इन्वायरमेंट को सुधारना है। आज भी मैं आपके सामने हूँ बस ये एक अवेयरनेस के लिए। देखिए, कोई भी चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं, आपको हर फैक्टर को देखना होगा। कोई, अब जैसे आप पर्सन ही, कोई भी पर्सन खराब नहीं होता है, उसको अगर आप उसको खराब समझते हैं तो उसका मतलब है कि उसको आपने बढ़िया से यूटिलाइज नहीं किया। जैसे मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, मेरे काम करने का तरीका ये नहीं है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करूं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है, वो पूरी तरह से हटेगा नहीं, लेकिन मैं एज ए कोच में काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैं देखता हूं कि ये आदमी में क्या कैपेबिलिटी है, उसको कैसे यूज किया जाए, और उस तरह से मैं यूज करता हूं और मैं सक्सेसफुल हूं, इसी वजह से सक्सेसफुल हूं। तो उसी तरह से अगर आप ये जैसे ये होता है, अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप माइनिंग की बात करेंगे, तो एक नॉर्मल इमेज आती है कि एक गंदगी वाला काम है, ये गंदगी फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन आपको एक जब ये कंपोजिट वे में देखेंगे, और और मैं मानता हूं कि अभी हम टेक्नोलॉजी में उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन जहां जहां भी हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले हैं और हम प्रॉपर ये सारे सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिए हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो आपको माइंस में ये नहीं लगेगा कि आप एक माइन में खड़े हैं। और मैं इसीलिए मैं आपको गोकुल पार्क में भी इसलिए इनवाइट करूंगा कि अगर आप देखेंगे कि हमने वहाँ सारे जो लोग टेम्पोरली रिहेबिलिटेट हुए हैं, अगर उनको परमानेंट जो ये घर बना के दे रहे हैं वो भी दें, तो वहां से हटेंगे नहीं, इसलिए कि उनको एक साफ सुथरा माहौल मिला है, पक्का रोड मिला है, पानी मिली है, सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए वो अगर जब हम उनको परमानेंट देंगे, अभी टेम्पोरली रिहेबिलिटेट किया है, लेकिन वो हमारे लिए हटाना मुश्किल होगा। तो ये अवेयरनेस जरूरी है, और इसके लिए हम एक पर्यावरण दर्पण करके मैगजीन भी निकालते हैं जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे बीसीसीएल वेबसाइट पे जाके इन प्रोजेक्ट टैब के अंदर एनवायरनमेंट है, उसको आप क्लिक करें, और उसमें आप देखेंगे हमारी सारी एक्टिविटीज तो रहती है। एक पर्यावरण दर्पण है, 2015 से हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी।
तो आप उससे भी जब समय मिले आप देखें। और आपकी अगर कुछ आर्टिकल्स आती है तो हम उसे पर्यावरण दर्पण में शामिल भी करेंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपकी ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आए। हम आपका फीडबैक भी चाहते हैं ताकि हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हो सकता है कि कुछ कमी हमें अपनी नहीं दिखाई देती हो, कि आप हमें दिखाएंगे तो हम अपने आप में उतना सुधार लाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में विश्वास रखता हूँ। हमारी कंपनी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में विश्वास रखती है और उसके लिए सारी नई टेक्नोलॉजीज ला रही है। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो होता है ये ऐसा नहीं है कि एक पैच वर्क है, ऐसा नहीं है। ये वेल प्लान्ड एक्टिविटी होती है। जो माइनिंग होती है ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके वो खुदाई शुरू कर सकते हैं। इसका एक गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बना रखा है और ढेर सारे रेगुलेटर हैं जो ये रेगुलेट करते हैं। आप माइनिंग करेंगे तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लीज तो लेनी ही है, आपको माइनिंग प्लान अप्रूव कराना है। उसके बाद कोल कंट्रोलर से उसका ओपनिंग परमिशन लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना है और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से कंसेंट टू इस्टेब्लिश लेना है। और इस प्रोसेस में उनके सारे जो इम्पैक्ट हो सकते हैं और उसका मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो ये जो EIA-EMP है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये सभी बढ़िया से कंसीडर करते हैं और उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं और उसके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं। उसके साथ साथ हम एक एक्सपर्ट एजेंसी से NABL एक्रीडेटेड लैब से इसको हम लोग एग्जामिन भी उसको टाइमली हर 15 दिन पे उसका एयर का वाटर का सैंपल लेके उसको एनालाइज किया जाता है कि वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं। आज के डेट में हमने 40 ऑनलाइन PM10 एनालाइजर, PM10 आप जानते होंगे, जो 10 माइक्रोन से छोटे साइज के डस्ट पार्टिकल हैं, उनको PM10 बोलते हैं। तो वो उसको भी मॉनिटर करते हैं जो कि हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। ऐसे रेजिडेंशियल एरिया के लिए 100 होता है, लेकिन झड़िया कोल फील्ड में जो माइनिंग एरिया है उसके लिए 300 का लिमिट है। तो उसके लिए भी करते हैं। हमने सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी कराई है DD से। ये एक चूंकि देखिए कहने के लिए हो सकता है कि हाँ ये इस जगह से जो सामने दिखता है वही कल्प्रिट दिखता है, लेकिन बिना साइंटिफिक अप्रोच के हम ये नहीं जान सकते हैं कि सोर्सेज कहाँ है। तो उसके लिए हम लोगों ने निरी से जो स्टडी कराई उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। डोमेस्टिक कंबशन सबसे बड़ा सोर्स है, 22% विंटर में, और समर में वो 17% हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करी रही है, उज्ज्वला स्कीम में लो इनकम ग्रुप को गैस भी दे रही है और हर जगह अभी गैस की भी अवेलेबिलिटी है, तो इसमें कम होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। तो ये अगर हम घटा सके। और दूसरा सबसे बड़ा है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में भी हमें जो गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही हैं सड़क पे, उसे भी कंट्रोल करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा आना होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारी जो छोटे छोटे ऑटो हो जाते हैं वो नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि CNG बसेज, अगर उस तरह के सिस्टम हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा पॉल्यूशन लोड काफी घटेगा। जहां तक हमारा सोर्सेज है, हम इस पे लगे हुए हैं कि फायर एक्सकेवेट करके हम भी चाहते हैं कि हम कन्वेयर पे आ जाए। कई जगह हमने कोशिश भी की, लेकिन सोशल प्रॉब्लम की वजह से, चूंकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है कोल लोडिंग के साथ, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम कन्वेयर सिस्टम करें, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है। तो वो थोड़ा कांस्टेंट है, हम लोगों को समझा रहे हैं, अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं, तो ताकि उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिले तो वो हमें सपोर्ट करें और हम ये सिस्टम लागू कर सकें। उसके अलावा मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सकेवेट आउट कर रहे हैं फायर को। उसके बाद हमने ढेर सारे मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए हैं। आज के डेट में ये 12 नहीं 16 हो गए हैं, 4 और हमने मंगा लिए हैं। तो ये बड़े बड़े मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए हैं, फॉग कैनल लगाए हैं और
ये आप देख सकते हैं पिक्चर से, फॉग कैनन में एकदम फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं, मिस्ट क्रिएट होता है, तो वो उसमें पानी का कंजम्पशन भी कम होता है और इफेक्टिव भी ज्यादा होता है डस्ट सप्रेशन में। उसके बाद 3 टियर प्लांटेशन करते हैं, रोड साइड प्लांटेशन करते हैं, और जो डंप हमारे 3-4 साल तक हमको एक्टिव नहीं रहने हैं लेकिन बाद में उसको रिहैंडल करना है, उस पर ग्रासिंग भी करते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं। ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का ये है कि इसमें नेटिव स्पीसीज हम लोग ये यूज करते हैं, कोई भी एक्सोटिक स्पीसीज नहीं। तो नेटिव स्पीसीज यूज करने से क्या फायदा होता है? अगर आप एक्सोटिक हटा देंगे, आप 5 स्पीसीज लगाएंगे, आप देखेंगे कि वहां 25 स्पीसीज आ गए, क्योंकि जो 20 स्पीसीज जो दबे हुए थे, जो एक्सोटिक स्पीसीज, उनको अपने वो जमीन में उनके बीज थे लेकिन उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो अपने आप उभर के सामने आते हैं। तो ये है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का बेनिफिट। और इसमें क्या होता है कि आपका जो फौना है वो भी आता है। इसका हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टडी भी करा के देखा, जो कि ये नेचुरल फॉरेस्ट के इक्विवेलेंट आ रहा है। इससे हमारा ये सोच है कि पोस्ट माइनिंग पीरियड में जब हम यहाँ माइनिंग खत्म हो जाएगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट माइनिंग पर से तो हट खत्म हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो उसके लिए सोलर तो हमारा रहेगा ही, उसके अलावा एक ये भी हम कर रहे हैं कि अगर बम्बू रहेगा, बाकी इंडस्ट्रीज तो रहेंगी, बम्बू से ये कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, अर्जुन से हमारा तसर कल्टीवेशन को सपोर्ट मिलेगा। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के, जिससे कि आप देख सकते हैं कि हमारा बायोडाइवर्सिटी कितनी इन्हांस हो रही है। और हमने इसी के लिए इको टूरिज्म स्कीम भी चालू की, जिसमें हम डिफरेंट स्कूल्स को इनवाइट करते हैं। इस साल कोरोना की वजह से केवल 2 स्कूल फिजिकली कर पाए और 2 वर्चुअली अटेंड किए हैं। बाकी स्कूल्स को भी हम इनवाइट करते हैं कि हमारे ढेर सारे साइट्स हैं, आप कहीं भी आके ये इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी माइनिंग को भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फायर को डील कर रहे हैं और उसके बाद कैसे रिक्लेम कर रहे हैं। ये है प्रोसेस। इसमें जैसे हम ये फिजिकल रिक्लेमेशन करते हैं, वीड रिमूवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीड ही है जो कि ग्रोथ रोकता है। उसके बाद मॉइस्चर वहाँ रिटेन करने के लिए मल्चिंग करते हैं। सीड बॉल हम लोग बनाते हैं, तो सीड बॉल में क्या करते हैं कि मिट्टी गोबर इक्वल मिला देते हैं और उसका 10वां हिस्सा सीड्स मिला देते हैं। ग्रास सीड हम लोग मंगाते हैं, झांसी वगैरह से मंगाते हैं या जोधपुर से मंगाते हैं, उसको मिक्स करते हैं और सीड बॉल स्प्रेड करते हैं, प्लांट लगाते हैं। तो उसकी वजह उससे सैपलिंग भी लगाते हैं, तो उससे हमारा 3 टियर डेवलप करता है और जिससे बायोडाइवर्सिटी आती है। ये है ग्रास कवर इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने नाम भी दिए हुए हैं। जो ग्रासेज हम लोग मंगाते हैं उसके स्पीसीज है। ये पहला स्टेप होता है हमारा इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का। उसके बाद श्रब्स की ये सारे स्पीसीज है, सारे लोकल स्पीसीज हैं, पेड़ वगैरह ये है, और उसके बाद ट्रीज की स्पीसीज है। तो ये इन 3 इस तरह के स्पीसीज को लेके जब हम काम करते हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ कितना जल्दी ये चेंजेस आया था। ये जब जैसे 2012 में हमने स्टार्ट किया था और 2014 तक ये स्थिति आ गई थी। अगर आप इसमें आप घुसने की कोशिश करेंगे तो बम्बू से स्क्रैचेस बॉडी पे आने डेफिनेट है। आपको इस तरह की चीजें हर एरिया में दिखेंगी, हर एरिया में कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये स्कीम किया है। इसका ये फौना आप देख सकते हैं, तरह तरह के फौना भी डेवलप हुए हैं। और इन्वायरमेंट का सबसे आप देखिए, बाकी मीटर्स को आप छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है बटरफ्लाई। अगर आपका कहीं पे भी आप देखें कि अगर बटरफ्लाई है तो वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर इन्वायरमेंट खराब है वहां बटरफ्लाई सरवाइव नहीं कर सकती है।
और आप नीचे में ये देखेंगे कि कितने स्पीसीज का ग्रोथ हमने ईयर वाइज हमने रखा है, कि जैसे 10-11 में किया था, 15 स्पीसीज से हमने स्टार्ट किया था, 13-14 तक 58 स्पीसीज और 17-18 तक 103 स्पीसीज। हाँ हाँ, इसके लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी सहायता ली और उससे काफी हमें इनपुट्स भी मिले, काफी सपोर्ट भी मिला। ये आप भी लोग के पिक्चर्स हैं, हो सकता है इसमें से कोई यहाँ बैठा भी हो। ये हम लोग सोलर पे भी काफी जोर दे रहे हैं और हम अभी 285 मेगावाट पावर का हम 25-26 तक बीसीसीएल में इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम जितना बिजली अभी खपत करते हैं उतना बिजली हम खुद जनरेट कर लेंगे। हम इस सेक्टर में हम न्यूट्रल हो जाएंगे। ये है हमारा, आपको दिखा रहे हैं, ये सीबीएम पे हमने काम शुरू कर दिया, सीबीएम जोन पे, और 2 जोन है, ये सेकेंड और थर्ड। इन दोनों पे अभी हमें काम करना बाकी है, इस पे भी हम काम करेंगे। ये मैं जस्ट आपको जानकारी के लिए दिखा दे रहा हूँ कि माइनिंग के बाद जब हम वाटर बॉडी क्रिएट कर देते हैं तो ये एक बेटर एक्वीफर हो जाता है और ये एक अच्छा आपके पास वाटर सोर्स हो जाता है। ये क्या बेनिफिट, ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ जो सिम्फर के सहयोग से प्लांट डेवलप हुआ है उसका है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं पार्क्स के हैं। या हमारे वाटर का कई जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और ये फिल्टर प्लांट में ये सब माइन वाटर का इस्तेमाल है। ये हमारे कुछ पार्क्स हैं, इसमें से आप किसी में भी जा सकते हैं। अभी कुछ डेवलप भी कर रहे हैं, गोवर्धन बेरा में और एक अशोक वाटिका कुइया में डेवलप कर रहे हैं, और ऐसे गोकुल पार्क है, पारसनाथ है, वृंदावन है कुसुंडा में, और तेतुलमारी है। उसके अलावा एक छोटा सा पार्क हमने अपने कोयला नगर में भी डेवलप किया है, वहां भी आप देख सकते हैं। ये एक ग्लिम्स है कि किस तरह की माइनिंग में कोल माइन के अंदर में कैसा डेवलप किया जा सकता है। ये सारे कोई भी माइन के बाहर का पिक्चर नहीं है, सब माइन के अंदर का है। इसमें हमने ये वेजिटेबल भी ग्रो करके देखा है। आगे जो हमने सोचा है कि माइंस को थोड़ा और रीऑर्गेनाइज करें ताकि इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम लगा सकें, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे जाएं, फायर को लिक्विडेट करें, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएं, सोलर प्लांट्स को और बढ़ाएं, मिस्ट और फॉग कैनन को बढ़ाएं, और ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करें अपने पॉपुलेटेड एरिया में, जिसमें रिपर है, हाई वॉल माइनिंग है, ये सब चीज़ को है, और अपने ओबी को सैंड में कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सप्लाई कर सकें। तो इस तरह की और भी चीजें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारा रोड मैप देखेंगे तो उसमें ये भी है कि जो वाटर सप्लाई है एज ए कोल इंडिया, हम लोग ने टारगेट रखा है कि 780 लाख मीटर क्यूब से हम बढ़ा के 1080 लाख मीटर क्यूब हम लोग पहुंचाएंगे। तो वाटर सप्लाई भी हमें बढ़ाना है, अपना सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट भी बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, और आप कभी भी हमसे डिस्कस करने के लिए, हमें सुझाव देने के लिए, हमसे सवाल पूछने के लिए आमंत्रित है। धन्यवाद। ये मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि ये आपके जो पर्यावरण दर्पण है, तो हमारे साइट पे आप देख लेंगे। एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारे, सॉरी, ये चला सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों ने काफी इस्तेमाल किया है हमारे साइट्स को, और कई तरह के वीडियोस भी बना के यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो जस्ट एक छोटा सा
तो जस्ट मैंने एक छोटा सा उसका क्लिप लिया है। और ये जो हम लोगों ने CSR में ढेर सारी एक्टिविटीज किए हैं, तो वो सब। धन्यवाद। Thank you, sir, for the informative lecture. You have outlined the various and you have increased the knowledge of the audience, I'm sure, in various things like starting from the India's energy security to the all the measures that are being adopted by BCCL for environmental protection, preservation, and reclamation, and the ecological restoration, about controlling mine fire, the Jharia mine fire, and of course societal development. So may I now request the audience to thank our speaker today with a big hand, please. Thank you. It is now time to honor our guest. May I now request our Chief Scientist, Dr. RBK Singh, sir, to kindly felicitate our guest with shawl and memento. Thank you, sir. With this, we have come to the end of the first event of today. The next event will be a very interesting science film that will be played for you. May I now request our audio-visual team to kindly play the video. कोविड-19 की महामारी ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सीमाओं को बंद कर दिया गया। कई देशों में पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों के लिए मारामारी मच गई। जब भारत ने अपनी सीमाओं को बंद किया तो एक निर्णय लिया गया कि अगर आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र तरीका है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरत थी दवाओं, पीपीई किट, जांच उपकरणों और वेंटिलेटर की। यह एक महत्वाकांक्षी निर्णय था। भारत ने इसका प्रबंधन कैसे किया और हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में इस स्तर को कैसे बढ़ाया? भारत में कोविड-19 की महामारी कैसे फैली? भारत में कोविड-19 का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया। मार्च की शुरुआत तक भी काफी कम, लगभग 50 मामले सामने आए, लेकिन इसे लेकर जो डर था वो सही साबित हुआ। हमारे देश के आकार और जनसंख्या के हिसाब से इन मामलों को बढ़ना ही था। हमने ये देखने के लिए अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दिया कि हम उस महामारी का सामना करने के लिए कितने तैयार थे जो हमारे देश को बर्बाद करने वाली थी। और जब हमने स्थिति का आकलन किया तो ये साफ हो गया कि इससे निपटने के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत थी, खासकर तब जब हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना था। जिन कोरोना वॉरियर्स को मरीजों को संभालना था, उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भारी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन भारत में इसका उत्पादन ना के बराबर था। मार्च 2020 के मध्य तक N95 मास्क की कमी होने लगी।
कोरोना की जांच के संसाधनों की बेहद कमी थी, इसलिए इससे निपटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जाए। मरीजों की संख्या बढ़ने से गंभीर मामलों के लिए वेंटिलेटर की समस्या खड़ी होने की संभावना थी, क्योंकि उस समय तक पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं थे। हमने आत्मनिर्भर बनने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वास्तव में ये सब कैसे होना था? ऐसा क्या हुआ कि भारत ने कमर कसनी शुरू कर दी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से पूंजी उपलब्ध कराई गई। ये आपात स्थिति थी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों की खरीद के लिए प्रोटोकॉल को आसान किया गया। विभिन्न मोर्चों पर इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों ने साथ मिलकर काम किया। आइए अब देखते हैं कि मास्क के मामले में क्या हुआ। भारत पर्याप्त मास्क का उत्पादन नहीं कर रहा था, खासकर N95 मास्क का। इस महामारी में इसकी विशेष मांग थी और भारत भारी मात्रा में इस तरह के मास्क का आयात कर रहा था। लोगों में संक्रमित होने के डर से इन्हें खरीदने की अफरा तफरी मची थी। इससे चिकित्सा जगत भी अपने लिए मास्क की उपलब्धता को लेकर चिंतित था। इसलिए मास्क के उत्पादन की तत्काल जरूरत थी। विभिन्न संगठनों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। DRDO ने अपने ग्वालियर परिसर में फेस मास्क डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने मास्क बनाने के लिए स्थानीय निर्माताओं के साथ भी सहयोग किया। इसी तरह IIT और IISC जैसे अन्य संस्थानों ने भी अपने स्तर पर मास्क तैयार किए। कई अन्य निजी कंपनियां जो कार, इत्र या कपड़े बनाती थीं, उन्होंने भी मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे कि रश्मि रेयर अर्थ ग्रुप, जो कि नोएडा में स्थित है और मोबाइल फोन और विद्युत उपकरण बनाती है। ऐसे में अपना योगदान देने और एक नया उद्यम शुरू करने के लिए तैयार थे। रश्मि रेयर अर्थ जैसे ग्रुप N95 और सर्जिकल मास्क का उत्पादन करने जा रहे थे। आज सर्जिकल प्रोडक्ट्स को ज्यादातर आयात किया जाता है और अगर वो भारत में बनाए जाते हैं तो भी कुछ चुनिंदा विदेशी ब्रांडों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी विश्व स्तरीय सर्जिकल इक्विपमेंट बनाएं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा निर्धारित मानदंडों में थोड़ी ढील दी गई थी, जिससे रश्मि रेयर अर्थ ग्रुप जैसे निजी उद्यमों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करना आसान हो गया। कुल मिलाकर ऐसी लगभग 1 दर्जन निजी कंपनियां थीं, जिन्होंने उसी दौरान मास्क बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में क्या एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इस चुनौती से निपटने में सक्षम थी? चलिए पहले N95 मास्क की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। यह मास्क एक विशेष प्रकार के कपड़े पॉलीप्रोपिलीन की कई परतों से बना होता है। N का मतलब नॉन ऑयल है, यानी तेल रहित, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई तेल आधारित कण मौजूद नहीं है। इस मास्क को कार्य क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। 95 का अर्थ है कि 95% हवा में पैदा होने वाले कण मास्क द्वारा छन जाते हैं, तो N99 मास्क 99% कणों को छान देता है। मास्क का फिल्टर 0.3 माइक्रोन या उससे ज्यादा होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। समझने के लिए एक आइडिया है कि इंसान का एक बाल लगभग 70 माइक्रोन होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस को रोक सकते हैं। N95 5 परतों वाला मास्क है। इसकी बाहरी परत 50 GSM स्पन बॉन्ड है, अंदर 25 GSM का मेल्ट ब्लोन है, उसके बाद 50 GSM का PP कॉटन है और फिर 25 GSM मेल्ट ब्लोन है और 25 GSM स्पन बॉन्ड है। ये 5 परतें 3 परतों और एक बार उपयोग होने वाले सर्जिकल मास्क की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ये डॉक्टरों के लिए बेहद उपयोगी है।
इसका एक फायदा ये भी है कि इन्हें अक्सर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका उपयोग पूरे दिन किया जा सकता है। इन 5 परतों की सामग्री बनाने के लिए विशेष तंत्र की जरूरत थी। पॉलीप्रोपिलीन, जिसका इस्तेमाल मूल रूप से विशेष प्रकार के थर्मोप्लास्टिक में किया जाता है, जब ये गर्म होता है तो अपनी संरचना और स्थायित्व को कायम रखते हुए नरम और सांचे में ढलने लायक बन जाता है। ये सामग्री कई प्रक्रियाओं के दौरान इस तरह की मशीनों से 240 से 260 डिग्री के उच्च दबाव और तापमान से गुजरती है। इससे जो मिश्रण बनता है उसे एक शीट पर छिड़का जाता है। फिर बाकी की चीजें भी इस सामग्री में मिलाई जाती हैं, जिसका इन पर एक इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ता है, जिससे छोटे पार्टिकल आकर्षित होते हैं, जिन्हें ये रोककर अपने में से गुजरने नहीं देता। इसी वजह से ये मास्क 95% सुरक्षित माने जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव से गुजरने के बाद रोल बनाने के लिए सामग्री को बंडल किया जाता है। मास्क बनाने से पहले इसे फिर से कीटाणु रहित किया जाता है। मास्क बनाने के कई चरण हैं। पहले सामग्री को मास्क के आकार में काटा जाता है, फिर नोजपिन बनाई जाती है। ये मास्क का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये साइड से छोटे कणों के प्रवेश को रोकता है और सांस लेने को भी आरामदायक बनाए रखता है। फिर 5 परतों को एक साथ दबाव से संकुचित किया जाता है। इसमें कोई सिलाई नहीं होती, सिर्फ 18 से 30 किलो वजन डालकर ये काम किया जाता है। फिर मास्क को बाहरी और भीतरी दोनों तरफ से सील किया जाता है, जिससे ये सारी सामग्री को एक साथ जोड़े रखता है। अगर ऐसा न किया जाए तो इसकी 5 परतें बिखर सकती हैं। उत्पादन शुरू करने के कुछ ही महीनों में कंपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सिस्टम को कारगर बनाने में सफल रही है। जब हमने बाजार में प्रवेश किया था, हम रोज 1 लाख मास्क बना रहे थे, लेकिन आज हमारी क्षमता 3 से 3.5 लाख मास्क प्रतिदिन है। दूसरी चुनौती पूरे उत्पादन लाइन के अर्थतंत्र को नियंत्रण में रखने की थी। फरवरी से अप्रैल के महीने में मास्क सोने की तरह बिके। उस समय सस्ते महंगे सभी दामों पर मास्क बिके, लेकिन हमने गुणवत्ता वाले मास्क बनाए और उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर बेचे। सस्टेनेबल प्राइस टू द एंड यूजर। जब उत्पादन शुरू हुआ तो ये स्पष्ट नहीं था कि मास्क सभी के लिए है या सिर्फ चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए अनिवार्य था। लेकिन चिकित्सा जगत से मिलने वाली जानकारी से यह साफ हो गया कि मास्क की जरूरत सभी को पड़ने वाली थी। इतना ही नहीं, भारत ने मास्क और महामारी में उपयोगी दूसरे सुरक्षा उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा था। हम ज्यादातर मास्क अस्पतालों को देते हैं, लेकिन कोविड को देखते हुए हम खुदरा विक्रेताओं या वितरकों को भी मास्क की आपूर्ति कर रहे हैं। जो मास्क पहले चीन और अमेरिका बनाते थे, वो अब भारत में बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक का उत्पादन कर रहे हैं और भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इसलिए इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। कई सार्वजनिक और निजी संगठन मास्क बनाने में जुट गए और जल्द ही भारत में पर्याप्त मास्क बनकर तैयार हो गए। दरअसल लॉकडाउन से पहले मास्क के निर्यात पर लगा प्रतिबंध जून 2020 तक हटा लिया गया। अब हमारे पास बाकी दुनिया को देने के लिए मास्क उपलब्ध थे। लेकिन हमारे सिस्टम में अन्य खामियां कौन सी हैं? आगे देखिए कि भारत ने कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर कैसे बनाए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
क्या भारत कोविड के इस संकट में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेगा? हम चीजों के आयात के भरोसे रहे बिना अपने लिए जरूरी सभी चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का प्रबंधन कैसे करेंगे? दुनिया के अन्य हिस्सों से जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके मुताबिक एक बड़ी समस्या वेंटिलेटर की कमी थी। इस कमी से एक भयानक स्थिति पैदा हो रही थी, जहां चिकित्सा जगत के पेशेवरों को यह तय करने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वेंटिलेटर किसे मिलेगा और किसे नहीं। डेटा से पता चला कि कोविड-19 वाले मरीजों के 5% मामलों में वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो वेंटिलेटर होता क्या है और ये कोविड संक्रमित मरीजों की कैसे मदद करता है? आसान है, एक वेंटिलेटर लगाइए। ये मैकेनिकली ऑक्सीजन को शरीर में पंप करता है। कुछ गंभीर मामलों में वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। सांसों को सामान्य रखने के लिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर का उपयोग हवा को शरीर में धकेलने के लिए किया जाता है। इससे रोगी को संक्रमण से लड़ने का समय मिलता है और वो ठीक हो जाता है। जब मार्च 2020 में कोविड का संकट भारत में आया, तब केवल लगभग 40,000 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जो स्थिति के हिसाब से पर्याप्त नहीं थे। इसलिए अधिक से अधिक वेंटिलेटर बनाने और विदेशों से हासिल करने का प्रयास किया गया। एग्वा दिल्ली की एक कंपनी है जो 2018 से वेंटिलेटर बना रही है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने के आइडिया से शुरुआत की। हमने महसूस किया कि हमारे देश के बहुत से लोगों के लिए चिकित्सा खर्च उनकी जेब से बाहर की बात है, और हम जानते हैं कि अधिकांश चिकित्सा उपकरण दुनिया के अन्य हिस्सों से मंगवाए जा रहे हैं। ये उपकरण भारत में नहीं बनते। कोविड महामारी की शुरुआत और जल्दी और कुशलता से उत्पादन करने की जरूरत को समझते हुए एग्वा ठोस रूप से योगदान करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उन्होंने इसका प्रबंधन कैसे किया? इसका जवाब मारुति के साथ साझेदारी से मिला, जिसने एग्वा के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। पिछले साल तक हम एक महीने में मुश्किल से 50 वेंटिलेटर बना रहे थे, लेकिन जब कोविड की बीमारी आई तो हमें विनिर्माण की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर करना पड़ा। इसे हमने एक महीने में 10,000 वेंटिलेटर तक बढ़ा लिया है। वेंटिलेटर के कुछ हिस्सों को बनाने में मारुति ने मदद की, जैसे कि प्रणाली को सुचारू बनाना, आपूर्ति निर्माण और परिवहन को सुव्यवस्थित करने में भी भूमिका निभाना। एग्वा वेंटिलेटर में अनोखा क्या है? पहले आइए उस प्रक्रिया को देखें जिससे वेंटिलेटर बनाए जाते हैं। मशीन का मुख्य भाग पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये ऐसा सर्किट है जिसमें 700 से अधिक घटक हैं जो पूरे वेंटिलेटर का संचालन करता है। इस स्टेशन पर पीसीबी की ऑक्सीजन और अन्य कार्यक्षमताओं के परीक्षण किए जाते हैं। पीसीबी का पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से अगले स्टेशन पर जाता है। यहाँ केबल और अन्य घटकों का उपयोग करके अंतिम बेस प्लेट जोड़ी जाती है। इसके बाद वेंटिलेटर चलाने वाली टरबाइन को इससे जोड़ा जाता है। फिर वेंटिलेटर स्टेशनों की एक श्रृंखला से गुजरता है, जहां विभिन्न घटकों को जोड़ा जाता है। एक बार एक घटक जोड़ने के बाद कन्वेयर बेल्ट इसे अगले स्टेशन पर ले जाता है, जब तक कि यह सेंसर स्टेशन पर नहीं पहुंच जाता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन सेंसर को जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन सेंसर रोगी के ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। एग्वा वेंटिलेटर पोर्टेबल है, इसलिए इसके सभी हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विशेष सावधानी बरती जाती है। एक बार जब वेंटिलेटर तैयार हो जाता है तो उसके सेंसर की कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है। वायु संचरण और सेंसर कार्यक्षमता के मामले में वेंटिलेटर की समग्र दक्षता को परखा जाता है। वेंटिलेटर के अंतिम परीक्षण में एक फेफड़े की कार्यप्रणाली के साथ इसका अनुकरण शामिल है। यह जांच पूरी होने के बाद संबद्ध लोगों के साथ ब्रांड का नाम आधुनिक लेजर तकनीक द्वारा गोदा जाता है। फिर इसकी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के बाद वेंटिलेटर को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ से उन्हें बाजार में उतारा जाता है।
our ventilator, one is it is turbine driven, so it only is हमारा वेंटिलेटर टरबाइन से चलता है, इसलिए इसका वजन केवल 2.5 किलोग्राम है। कम वजन होने से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आईसीयू पर उनकी निर्भरता भी कम है। So because of its small size and less dependability on the ICU infrastructure. So let's say इसकी मदद से आप अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती है। you can do that with our ventilators because it does not need oxygen pipeline, it does not need air pipeline. It can simply pump in the यह बस हवा में पंप कर सकता है। यदि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो इसे एक सांद्रक या ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ा जा सकता है। इसकी कार्य क्षमता भी आईसीयू वेंटिलेटर के समान होती है। Or you can also connect it to an oxygen cylinder and you can deliver that to the patient. But at the basic end, the functionality is just like an ICU ventilator. वेंटिलेटर का इस्तेमाल आसान है। इसके साथ एक टैबलेट जुड़ी होती है जिससे निगरानी और नियंत्रण का काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरे वेंटिलेटर के मुकाबले यह बिजली की खपत कम करता है। इसका उपयोग घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। ये उस समय और उपयोगी हो जाता है जब कोविड के मामलों में अस्पतालों में जगह नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया में सबसे कम लागत वाला वेंटिलेटर है। एग्वा ने आत्मनिर्भरता की जरूरत को समझा। उन्होंने इसके सभी भागों को स्थानीय तौर पर हासिल किया। उन्होंने वेंटिलेटर को इस तरह से डिजाइन किया कि जरूरत पड़ने पर इसके पुर्जों को बिना किसी कठिनाई के बदला जा सके। 6 महीने पहले हम जहां वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण आयात करते थे, आज हम आत्मनिर्भरता के उस मकाम पर हैं कि हम अन्य देशों को वेंटिलेटर निर्यात करने में सक्षम हैं। The silver lining to all of this is that we have understood. बड़ी बात यह है कि हमने एक देश के रूप में आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा है। इसी वजह से भारतीय निर्माताओं की मदद के लिए नीति निर्माता, नीतियां और सभी तरह के अनुमोदन देने वाली प्रणालियों ने एक साथ मिलकर काम किया है। इस क्षेत्र में अब बहुत सा निवेश किया गया है, जिसने अनुसंधान की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। In this sector, which has really helped the research to skyrocket. लेकिन कोविड में अन्य परीक्षणों में समान शोध और समाधान संभव थे। आगे देखिए कि भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने कैसे परीक्षण किटों की कमी का समाधान निकाला। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई में आत्मनिर्भरता की दिशा में कैसे काम किया। मार्च 2020 में रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया। कोविड लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे देश खुलने लगा, वैसे वैसे मामले बढ़ने लगे। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए स्पष्ट था कि हमें पहला कदम इस बीमारी को पहचानने में लगाना होगा और इसका एक ही रास्ता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का परीक्षण करना। लेकिन भारत में पर्याप्त परीक्षण किट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसे लोग जिनमें बीमारी के लक्षण तो थे लेकिन जो किसी कोविड मरीज के संपर्क में नहीं थे, ऐसे लोगों का परीक्षण नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट किट का कोई उत्पादन नहीं होता था और हम उनके आयात पर निर्भर थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस अंतर को पाटने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी एक आणविक जीव विज्ञान कंपनी है
जिसने HIV और हेपेटाइटिस B और C जैसी अन्य बीमारियों की पहचान के लिए जांच विधि विकसित की है। उन्होंने कोविड-19 के लिए एक जांच किट विकसित करने का काम शुरू किया। मुझे याद है कि हमने जनवरी में इसके बारे में बात करनी शुरू की थी कि अगर ये बीमारी हमारे देश में फैलती है तो कम से कम इसके लिए जांच तो उपलब्ध होनी ही चाहिए, और अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आईडीनेट जैसे परीक्षण को हमारी कंपनी ने ही विकसित किया था, तो हमें इस काम को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन इस तरह के किट को विकसित करने में कभी-कभी महीनों लग जाते हैं। लेकिन जो हालात थे उन्हें समझकर माई लैब की टीम ने कम से कम 6 से 7 सप्ताह के समय में एक परीक्षण किट बनाने में कामयाब रही। आज माई लैब दुनिया भर के उत्पादों का सबसे व्यापक श्रेणी प्रदान करती है। इसमें RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट शामिल हैं। आज परीक्षणों मानकों में सबसे बेहतर RT-PCR टेस्ट है। RT-PCR का अर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कोविड-19 के क्या कारण है? ये एक वायरस है जिसे SARS-CoV-2 कहा जाता है, जिसकी आनुवंशिक सामग्री राइबो न्यूक्लिक एसिड या RNA का एकल स्ट्रैंड है। पहले चरण में RNA को निकालने की आवश्यकता होती है। किसी इंसान के गले या नाक के अंदर से साधारण स्वाब लिया जाता है। फिर 3 चरणों की एक प्रक्रिया होती है जिससे RNA को निकालने में मदद मिलती है। लाइसिस, यह कोशिका के टूटने को संदर्भित करता है। फिर बाइंडिंग और वॉशिंग होती है। बाइंडिंग एजेंट और वॉश बफर के साथ नमूना एल्यूशन के लिए तैयार है। एल्यूशन यह एक विलायक के साथ धोने से एक सामग्री को दूसरे से निकालने की प्रक्रिया है। कोशिकाओं से कुल RNA के शुद्धिकरण में एक विशेष एलायंस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। रोगियों के स्वैब द्वारा केवल RNA की एक छोटी सी मात्रा निकाली जाती है, जो परीक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए RNA एक एकल स्ट्रैंड अणु एक एंजाइम का उपयोग करके 2 स्ट्रैंड DNA में परिवर्तित हो जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। यह RT-PCR का RT है। निष्कर्षण के बाद प्रवर्धन प्रक्रिया से DNA की अरबों प्रतियां बनती हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त हैं। इस प्रक्रिया में प्रवर्धन के लिए आवश्यक अभिकर्मकों को निकाले गए RNA के साथ मिलाया जाता है और फिर ट्यूब को RT-PCR उपकरण में संसाधित किया जाता है। उसके बाद नमूना, डेटा विश्लेषण और परिणाम स्पष्टीकरण के चरण में जाता है। लगभग 1 घंटे के प्रवर्धन के बाद डेटा उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग परिणाम स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। परिणाम एक प्रवर्धन ग्राफ के रूप में मिलते हैं, जिसे सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में पढ़ा और दर्शाया जाता है। In RT-PCR test, you directly detect the RT-PCR में हम सीधे वायरस की आनुवांशिक सामग्री का पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए हम नमूना लेते हैं। यदि कोई वायरस मौजूद है तो उसे तोड़ते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और इसे PCR मशीन पर PCR अभिकर्मक के साथ लोड करते हैं। फिर परीक्षण से प्रवर्धन करके वायरस का पता लगाते हैं। यदि वायरस की एक प्रति होती है तो मशीन पर रीड होने से पहले इसकी लाखों प्रतिलिपियां बन जाती हैं। RT-PCR से परिणाम मिलने में आमतौर पर 8-9 घंटे लगते हैं। हालांकि माई लैब्स परीक्षण से 2.5 से 3 घंटे में परिणाम मिल जाते हैं। हालांकि इसमें एक कमी यह है कि परीक्षण के लिए अभी भी एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में ग्रामीण आबादी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के विकल्प की जरूरत है। फंडामेंटल वाज वेरी बुनियादी चीजें साफ थी कि परीक्षणों को प्रभावी, बड़े पैमाने पर सटीक, सस्ता और उपयोग में सरल होना चाहिए। We don't make it simpler for the customers to use it. माई लैब के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा नवाचार किया, यानी एक बॉक्स में प्रयोगशाला। ये सही है, पूरी प्रयोगशाला एक बॉक्स में ही है। इससे कोई कहीं भी जांच कर सकता है। बॉक्स पूरा अभिकर्मकों से भरा है। इन सभी को जैविक नमूनों में लोड करने की आवश्यकता है। एक बार जब ये हो जाता है तो बाकी की प्रक्रिया मशीन द्वारा स्वचालित रूप से होती है। अंत में PCR मशीन में डालने के लिए स्ट्रिप्स तैयार हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं और PCR मशीन को 1 से 1.5 घंटा लगता है।
एक बॉक्स में यह प्रयोगशाला एक साथ 32 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। इस कंपनी ने एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट भी किए हैं। ये किट विकसित करने वाली ऐसी पहली भारतीय कंपनी थी जिसे ICMR से मंजूरी मिली। इन किट की कीमत भी उचित है, जिससे इन्हें ज्यादा मात्रा में भी हासिल किया जा सकता है। We could see the urgency for our nation. हम सब देश के लिए एक प्रकार का युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि उत्पाद आसानी से उपलब्ध हों। ऐसी 90% चीजों को हम आयात करते थे, हमने उन्हें यहीं बनाना शुरू कर दिया। मुझे और मेरी टीम को जीवन भर कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस समय देश के लिए मौजूद रहे जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। Because we were present when the country needed most. इन उपायों के साथ पूरे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की कंपनियां PPE किट, टीके, परीक्षण और अन्य चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एकजुट हुई। चिकित्सा सुविधाओं ने तकनीक और दवाओं के साथ प्रयोग किया ताकि बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक किया जा सके। हालांकि कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही, लेकिन हमें इस बीमारी से निपटने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इस महामारी से बड़ी सीख ये भी मिली कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को आत्मनिर्भर होने की बहुत जरूरत थी। आत्मनिर्भरता का सफर जारी है, लेकिन कम से कम चिकित्सा नवाचार कोविड जैसे संकट में मदद कर सकते हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसे कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के और करीब लाते हैं। धन्यवाद इस वैज्ञानिक चलचित्र के लिए। इस साप्ताहिक विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन मुख्य भवन के सामने किया गया है। तो मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय कसियाटाड़ के छात्रों एवं DM पब्लिक स्कूल पर्शिया के छात्रों एवं अध्यापकों से अनुरोध करता हूं कि वो क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शनी क्षेत्र की तरफ अग्रसर हों एवं विज्ञान प्रदर्शनी का लाभ लें। आप सभी के लिए सभागार के बाहर चाय की भी व्यवस्था की गई है, तो आप क्रमबद्ध तरीके से चाय लेते हुए प्रदर्शनी क्षेत्र की ओर अग्रसर हों। साथ ही यह आगे का सारा कार्यक्रम प्रदर्शनी क्षेत्र में भी स्क्रीनों पे उपलब्ध है, आप वहां भी देख सकते हैं। और यह कार्यक्रम यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप इसे वहां से भी कभी भी यूट्यूब लिंक का उपयोग कर देख सकते हैं। धन्यवाद।
यही तो है, ये वाला यही है ना। हाँ, ये वही पीपीटी बोल रहे थे सर। ठीक है। नमस्कार। सिंपल के सभागार में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्रों एवं अध्यापकों का हम इस अखिल भारतीय साप्ताहिक विज्ञान कार्यक्रम के तृतीय दिवस के दूसरे चरण में स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमारे हमारे बीच आज इस सत्र के सम्मानित अतिथि प्रोफेसर धीरज कुमार सर पहुंच चुके हैं। सर का व्याख्यान होना है। मैं जेके पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि सर को डायस पे आमंत्रित करें। जैसा कि हमारी सिम्फर की परंपरा है, हम अपने अतिथियों का पुस्तक भेंट कर सम्मान व आदर करते हैं। मैं अपने वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक जेके पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि सर का सम्मान पुस्तक भेंट कर करें। It is my proud privilege to introduce Professor Dheeraj Kumar sir to the audience. Professor Dheeraj Kumar is presently Dean, Innovation, Incubation and Entrepreneurship at IIT-ISM Dhanbad and the Project Director of Mining Technology Innovation Hub of Government of India. He has done his MTech from IIT-ISM Dhanbad and PhD from IIT Kharagpur. He has more than 18 years of experience in teaching and research at various organizations. His areas of expertise include surveying, geomatics, and IT application in different earth science domains. Professor Dheeraj Kumar has completed over 75 sponsored projects and contributed to the development of products and technologies for mining sectors and trained more than 600 mining industry professionals on innovative mining technologies. May I now request Professor Dheeraj Kumar sir to kindly come up the stage and present his lecture. So, thank you all. A special thanks to Dr. Pandey and his team who has been kind enough to invite me to this podium and sharing some of my experiences with you all. My dear children and mentors of different schools, faculty members, very good afternoon to you all, rather good morning to you all. As introduced by my colleague scientist, yes, right now I am taking care of innovation and entrepreneurship activity at IIT-ISM Dhanbad. And through my journey in the institute in last 15 years, I have learned a lot. And you people have made me a sort of experienced person because we learn from you students as well.
you might have heard in the past that we organized one Grand Innovation Challenge for the school children of Jharkhand. And in that, some of the schools from Dhanbad, they also won first, second prizes like DAV, Koila Nagar, and Madh Vidyalaya Dhaiya. They had innovative ideas, and those innovative ideas got selected by IIT-ISM group of expertise. And those ideas got selected, and they got funded also for development of proof of concept. So I keep on driving pleasures. I keep on driving lots of energy from you all. And the second challenge is right now it's on, where we have classified different sectors in which you have certain problems listed, and we invite you to solve those problems. And this challenge will be for entire eastern part of the country. You can go to the website of IIT-ISM Dhanbad, and you can find out the innovative challenges. Competition is already on live, and you can submit your proposals for that. You have immense funding, and you will have the mentorship support from both the faculty members of the institute and IITians, not only from IIT-ISM but from other institutions also. They will mentor you all. When we talk about the development of SNT in India, yes, it's a high time. In last 5 to 6 years, we have seen a major impact of SNT developments in India due to various missions of government of India. We have been able to carry these SNT developments in India at far pace, much better than what was there in earlier times. So if you just see the growth of SNT in India, right now we have a very strong network of science and technology institutions and trained manpower. If you talk about SNT, which are being basically practiced in India, it's mainly due to the different labs of CSIR. We have IITs, NITs, Institution of National Importances. They are carrying out innovative research work in various areas which are basically mandated by the government of India, and depending on the requirement in different sectors. The sectors which are basically focused on as of now is energy is one of the very prime sectors, health hygiene the second sector, food the third sector, and agriculture the fourth sector, and of course automobile industry is the fifth sector, on which lots of researches are going on in India, and there are plenty of opportunities existing in these segments. If you अच्छा ओके 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 अगर आप देखेंगे जो हमारा स्टे है या हमारा जो अभी पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, हम अभी थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर को होल्ड कर रहे हैं अमॉन्ग्स द वर्ल्ड. इस फाइनेंशियल ईयर जो 2021 खत्म हो रहा है उसमें वी हैव टेकन 5000 R&D प्रोजेक्ट्स. अगर R&D प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, छोटा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं व्हाट इज R&D प्रोजेक्ट्स. कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो कि बोलते हैं इनोवेटिव प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है. उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फंड देती है, इंस्टीट्यूशंस को फंड देती है, रिसर्चर्स को फंड देती है, उस इंस्टीट्यूट के जो साइंटिफिक बॉडीज होते हैं उनको फंड देती है और बोलती है इस पे आप बेसिक रिसर्च कीजिए, इस पे आप अप्लाइड रिसर्च कीजिए, और इस अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के तहत आप कुछ प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कीजिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कीजिए, टेक्निकल डेवलपमेंट की बात कीजिए. तो अगर उसको आप मिला के देखते हैं तो एज ऑफ नाउ वी हैव 5000+ R&D प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग इन वेरियस IITs, CSIR labs and various institutions of national importances. We have about 2500+ fellowships. अगर आप फेलोशिप्स की बात करेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें यंग इनोवेटर्स की जरूरत पड़ती है. तो यंग इनोवेटर्स फ्रॉम वेयर विल टेक, ये यंग इनोवेटर्स हम लेते हैं, ग्रेजुएट्स को लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेते हैं, और उनके थ्रू हम प्रोजेक्ट करवाते हैं. दे आर कॉल्ड एज फेलोज, प्रोजेक्ट फेलोज. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएट यू मे बी सीइंग दैट देयर आर सर्टेन कॉल्स फॉर प्रपोजल्स, देयर आर सर्टेन कॉल्स फॉर एप्लीकेशंस वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट फेलोशिप्स, और आपको मौका मिलेगा इनोवेटिव प्रोजेक्ट में काम करने का. पब्लिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच गवर्न्स कि आप किस बेस में किस जगह पे हैं एसएनटी डेवलपमेंट में इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. और रादर जो साइंटिस्ट लोग हैं, रादर जो टेक्नोलॉजिस्ट लोग हैं, रादर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका कैरियर प्रोग्रेशन पब्लिकेशन से ही होता है. और किसी भी कंट्री का आप एसएनटी में किस लेवल में आप जा रहे हैं, पब्लिकेशन बहुत मैटर करता है. तो पब्लिकेशन में भी आपको इंटरनेशनल लेवल का पब्लिकेशन करना होता है, और उस पब्लिकेशन के थ्रू ही आप अपना जो रिसर्च करते हैं आप थ्रू आउट द कम्युनिटी, थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलेट करते हैं और प्रोपगेट करते हैं रादर.
तो इसमें इनोवेशंस भी आता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कुछ रिसर्च होता है जिसमें कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज जर्मिनेट हो जाता है और उसके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अच्छा बन के आता है, उससे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बनने चालू हो जाते हैं। तो उसमें कुछ कुछ इनोवेशंस जो आता है कि वर्ल्ड वाइड इनोवेशंस हो गया, इसमें 797 इनोवेशंस पिछले इस फाइनेंशियल में 21-22 में लोगों ने किया है। इफ यू टॉक अबाउट द रैंकिंग्स ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ बेसिक रिसर्च, तो बेसिक रिसर्च में यस वी आर नाउ गुड प्लेस इन द बेसिक रिसर्च ऑल्सो। थर्ड रैंक हमारा है अभी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस में। इन द फील्ड ऑफ बेसिक रिसर्च हमने बता ही दिया है। 2014 से लेके 21 तक में हमने जो पैटेंट का जो अप्रूवल हमारा हुआ है, वी हैव ए रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 572%। आपको जस्ट पैटेंट के बारे में छोटा सा बता दें, व्हाट इज पैटेंट। जब कोई आप इनोवेटिव रिसर्च करते हैं, उस इनोवेटिव रिसर्च को आपको ऑन करना पड़ता है। अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे, एज इट इज उसको पब्लिश कर देंगे, तो वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी उसको टेकअप कर लेगा, बोलेगा ये मेरा अपना इनोवेशन है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप ही का इनोवेशन है और उसका आपका उसके ऊपर में पूरा कॉपीराइट है, उसके ऊपर में आपका ऑनरशिप है, हम उसको पैटेंट में लेके जाते हैं कि हमारा इनोवेशन है, हमारा इन्वेंशन है, आई एम द ऑनर ऑफ दैट इन्वेंशन। तो उसको हमको पैटेंट के थ्रू पब्लिश कर देना पड़ता है। देयर आर टू टाइप ऑफ पैटेंट्स, एक जो होता है आपको विद इन द कंट्री आप उसको पैटेंटशिप आपको मिलेगा, या एक आपका थ्रू द वर्ल्ड आपको यूएस पैटेंट और डिफरेंट कंट्रीज का अपना पैटेंट एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू आपको जाना होगा। एंड जिसके पास जितना पैटेंट है अभी वो उतना ही रीच है, समझ लीजिए। आपके पास यू डोंट रिक्वायर मनी इन योर बैंक टू बिकम द रीचर, यू रिक्वायर नंबर ऑफ पैटेंट्स इन द नेम ऑफ यू विच विल मेक यू रिचर एंड रिचर। आपने एग्जाम्पल देखा होगा 3 इडियट्स में फुनसु वांगरू जी थे, उनके पास नंबर ऑफ पैटेंट्स बहुत ज्यादा था और उनको बोलते थे ही इज द वर्ल्ड लीडर। Similarly, there are various innovative missions government have launched, जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। अभी पूरे कंट्री में 25 इनोवेशन हब्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोल के रखा है, और उस इनोवेशन हब के तहत जितने यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस ढंग के जो भी स्कॉलर्स है उनको उसके साथ जोड़ा जा रहा है। डिफरेंट साइंटिफिक बॉडी है उनके साथ जोड़ा जा रहा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव उनका है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इन द पैटर्न ऑफ मेक इन इंडिया। सेकेंड जो उनका है इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप है। इवन यू स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट सम इनोवेटिव वर्क। आप किसी भी 25 हब जिसकी हम नाम ले रहे हैं, 25 में से किसी हब के साथ आप जुड़ सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और उसमें जाके आप काम कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन योर ऑन एजुकेशन। हम आपको उस 25 हब का नाम बताएंगे। देयर आर 9500 प्लस अटल टिंकरिंग लैब। हो सकता है कि आपके स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब हो। थ्रू आउट द कंट्री अभी 9500 अटल टिंकरिंग लैब है और दी अटल टिंकरिंग लैब हैज बीन सेट अप इन डिफरेंट स्कूल्स। और इस अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू आप एक बेसिक रिसर्च या छोटा मोटा टिंकरिंग आप कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रोजेक्ट टेकअप कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की ओर जा सकते हैं। अगर आपको आपका आइडिया जर्मिनेट कर गया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसके बाद आगे फंडिंग के लिए आप गवर्नमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं। Similarly, Government of India has also set up 27 Atal Community Innovation Centers across the country, जिसमें का बेसिक पर्पस क्या है कि हम कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे इनोवेशंस कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल आई गिव यू, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम फुली डिपेंडेंट है, अभी हमारा कंट्री फुली एग्रीकल्चर फार्मर पे डिपेंडेंट है। तो फार्मर के बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए, उनके वर्क को ईज आउट करने के लिए क्या इनोवेशंस आप कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स है। और IISM धनबाद में भी आपका एक ऐसा सेंटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। अगर आपके पास कुछ इस ढंग का कोई भी आइडिया है, वो आइडिया सीधा आप आइडिया अपने एक मेंटर के साथ लेके आप हमारे पास आ सकते हैं, IISM में आ सकते हैं और आपकी आइडिया को हम फंड कर देंगे और आपके आइडिया के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। इफ यू टॉक अबाउट जो अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है यूनिकॉर्न, आप लोगों से कितना सुना होगा? यूनिकॉर्न का नाम कितना सुने हैं आप लोगों में से? व्हाट इज यूनिकॉर्न? राइट। सो अब आप देखिए कि वी हैव बिकम थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न फॉर द ईयर 2021. In year 2021 we had 44 such unicorns. Now we have ranked number 3, and the total funding which we have got through unicorn is $42 billion across 1584 deals in 2021. तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए इसमें से कुछ यूनिकॉर्न की ओर सोच सकते हैं। एंड फॉर बिकमिंग यूनिकॉर्न यू नीड नॉट टू हैव अ डिग्री लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल और ग्रेजुएशन एनीथिंग। एक सिंपल लेमैन कैन ऑल्सो बिकम अ यूनिकॉर्न, can
Only thing what you require is innovative idea, and that idea should be yours. That idea should be basically your own patent. उसके ऊपर में आप यूनिकॉर्न बन सकते हैं. If you name top 10 यूनिकॉर्न in 2021, सबका अपने पेटीएम सब लोग यूज कर रहे हैं. Yes, ओयो रूम्स का सुना होगा नाम आपने. अब ये ओयो रूम्स का आप कहेंगे इसमें टेक्नोलॉजी क्या है. Yes, there is a टेक्नोलॉजी. सामान किसी और का बेच कोई और रहा है. ओयो रूम्स के पास अपना एक भी होटल नहीं है, अपना एक भी उनका रेजिडेंशियल सेटअप्स नहीं है, बट स्टिल दे आर बिकमिंग दे आर अर्नर्स. क्यों? द आइडिया व्हाट दे हैव कम अप विथ इज मैटरिंग हियर. बायजूस, वी ऑल आर यूजर ऑफ बायजूस. ओला कैब्स, स्विगी, जोमैटो, पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, उड़ान, Crade, lots of unicorns are there, and they have grown their business like anything, and they have in turn they have raised the country's name in the international platform, international arena. Here, the only common factor lies is innovative idea through technology development, through process development, through product development. अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा प्रोसेस दिया है, that also is a development. बट उसको क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करके रख लेना है. जब हम जो बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द कंट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 25 सच कंपनीज इन 25 टॉप इंस्टीट्यूशंस. और उनको बोला गया है कि यू फोकस ऑन योर ऑन एकेडमिक्स, you focus on your own R&D, basic R&D, but let the product development, let the process development, let the technology development, let the innovation incubation system built up by company, nurtured by you. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 25 डिफरेंट सेक्टर में 25 डिफरेंट कंपनीज को खोल के रखा है थ्रू द कंट्री. तो उसका क्लासिक एग्जांपल जैसे एआई का नाम आपने सबने सुना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर किसी को लीडर बनना होगा तो उनको आईआईटी खड़गपुर जाना होगा. आईआईटी खड़गपुर में एक कंपनी खुला है आई हब के नाम से. आपको गूगल में सर्च करना है, आई हब सर्च करना है, और आप देखेंगे डेली कुछ न कुछ आइडिया का कॉल वो भेजते रहते हैं. आपको एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलके एक मेंटर सर्च कर लेना है, आईआईटी खड़गपुर को अप्लाई कर देना है कि यू हैव गॉट वेरी इनोवेटिव आइडिया इन एआईएमएल एंड यू वांट ए प्लेटफॉर्म एट आई हब. Immediately you will find the project director of iHub will reply back to you and will provide you some sort of support so that you can get yourself nurtured through your own school. You need not to go there. आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने स्कूल में बैठे हुए अपना एजुकेशन को कैरी करते हुए भी फंड आप उनसे ले सकते हैं, और जो चीज आप बनाएंगे, जो प्रोसेस आप डेवलप करेंगे, यू विल बी द ऑनर ऑफ दैट प्रोसेस. उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो कहेंगे कि ये हमारा बच्चा हमारे साथ मिलके ये काम किया है, वो आपका केवल नाम यूज करेंगे. सिमिलरली एग्रीकल्चर का सेक्टर अगर बात करेंगे तो आईआईटी रोपर को एग्रीकल्चर का दिया गया है. उनकी एक कंपनी खुली है एग्रीकल्चर में. आईएसएम धनबाद, वी वर लीडर इन माइनिंग, तो हमें माइनिंग का कंपनी खोलने के लिए बोला गया है, एंड वी हैव ओपन आवर कंपनी इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन. तो थ्रू द कंट्री अगर माइनिंग का कुछ हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो मुझे सारे इस ढंग के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिंपर, आईआईटीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करते हैं, उनके साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा. एंड एकेडमिक नहीं करना है, हमें वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काम करना है. लाइकवाइज अगर कोई ड्रोन में इंटरेस्टेड है तो देयर इज ए कंपनी इन वन ऑफ द आईआईटीज व्हिच विल टॉक अबाउट ओनली ड्रोन्स एंड ड्रोन्स. कोई अगर रोबोट में डेवलपमेंट, रोबोटिक ह्यूमन इंटरफेस की बात करना है इसको, तो यू नीड नॉट टू सी एनीवेयर एल्स. आपके पास लिस्ट है, यू हैव ऑल 25 हब्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम, NMICPS का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. उसमें क्लिक कीजिए, आप जाके 2500 हब का डिटेल मिल जाएगा, आपको 2500 कंपनी का डिटेल मिल जाएगा, एंड यू डोंट लुक बैकवर्ड, सिंपली लुक फॉरवर्ड एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम दैम. अब हम बहुत ब्रीफली थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम बात करते हैं तो डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है. और ये डेवलपमेंट हो सकता है कि वो छोटा छोटा डेवलपमेंट हम दिखा रहे होंगे, बट सिंस अभी आपने वो प्लेटफॉर्म को नहीं अटेंड किया है जो हम बहुत हाई एंड रिसर्च की बात करें, तो इसलिए मैं छोटा छोटा लेके बात कर रहे हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो हमारा 80% पॉपुलेशन जो कंट्री का है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. उनका लाइवलीहुड जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है. तो हम ऐसा कुछ रिसर्च करें, ऐसा कुछ इनोवेशन करें, सो दैट ये जो हमारे फार्मर्स हैं और जिनका एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है, उनको कुछ उनके बिजनेस में कुछ उनको एक ईज आउट हो जाए. इसमें अभी आप देखेंगे दो कंपनी अभी अपने झारखंड में 2 कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर गया है. उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फार्मर्स के प्रोडक्ट को
उनके जस्ट जहां से उनका फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से लेके पूरे सिटी में, पूरे कंट्री में फैलाने का काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक जोमेटो, जस्ट लाइक जो आपका स्विगी का काम कर रहे हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में फैला रहे हैं, उसका मार्केट पोटेंशियल का क्या वायबिलिटी है वो निकाल रहे हैं, उसके थ्रू फार्मर को बेनिफिट दे रहे हैं वो, एंड एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा हो गई है उससे। आप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे, फार्मिंग में गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, दो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आईसीटी का क्या क्या वहां पे रोल आया है। एक सबसे पहला है कि आप रिसर्च टू फार्मर R2F, मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है आपका या जिस ढंग का जो भी लोकेशन है आपका, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, लेट द रिसर्च आउटकम बी डायरेक्टली बी सेंड टू द फार्मर। उसको आप अपने पेपर पर मत सीमित कीजिए, फार्मर को ध्यान में रखते हुए आप उस पर रिसर्च कीजिए। आई गिव यू वन एग्जांपल, जो हम लोग जिसे भी कर रहे हैं अपने IISM में, जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, हम वहाँ पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि जो स्प्रे गन है, जो एग्रीकल्चर की जो स्प्रे गन की जरूरत पड़ती है, वो स्प्रे गन हम चाइना से क्यों मंगाएं? वो छोटा सा इनोवेशन उसमें लगेगा, हम वो स्प्रे गन को खुद से क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं एट लो कॉस्ट, सूटिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपका लैक मशीन है, झारखंड में क्या है कि लैक का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कॉटन कपास की यहाँ पे खेती बहुत अच्छा होती है, तो कैन बी डेवलप सम टूल्स, कैन बी डेवलप सम टेक्नोलॉजीज, जिससे कारण क्या है कि हमारा प्रोसेसिंग, लैक का प्रोसेसिंग बहुत हम इजीली कर लें और बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग कर लें और उसका इफिशियंसी हम इम्प्रूव कर लें लैक एक्सट्रैक्शन का। इसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं और अच्छा रिसर्च हो रहा है इसके ऊपर में। आपने एग्जाम्पल अभी सुना होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर बहुत जोर शोर से चल रहा है। पीपुल थ्रू आउट द कंट्री in different institutions they are working on how basically we can go for precision agriculture. Precision agriculture का पर्पस क्या होता है कि जिस समय राइट टाइम पे राइट रिक्वायरमेंट आप पता कर लें। अगर हम पैडी क्रॉप की बात करते हैं या धान की खेती, गेहूं की खेती, इधर का कोई खेती की बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए किस समय हमें क्या न्यूट्रिएंट डालना है अपने इसमें जाके अपने फार्म में, किस समय हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो सॉइल हमारा यूज कर रहे हैं उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है। हम सैटेलाइट के थ्रू, ड्रोन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस समय न्यूट्रिएंट की जरूरत है, किस समय हमें इसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, किस समय वाटर का स्प्रिंकलिंग करना पड़ेगा। यस, यू कैन डू नाउ। आपके पास अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, आप इस पे रिसर्च कीजिए। आप लोग छोटे से बच्चे लोग ड्रोन तो बहुत ड्रोन देखे होंगे, शादी ब्याह में ड्रोन लगा के कैमरा लगा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, ये चीज एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं लोग। सिंपल कंसेप्ट है, यू हैव 32 मेगापिक्सल कैमरा पुट इन ए ड्रोन, और वो कैमरा से आप फोटोग्राफी कर लीजिए, कंपेयर मल्टीपल फोटोग्राफ्स, इमेज प्रोसेसिंग टूल आप डेवलप कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपका क्रॉप का क्या हेल्थ है, क्रॉप का क्या ग्रोथ हो रहा है, किस समय आपको न्यूट्रिएंट क्रॉप में लगेगा, आपका जो सॉइल जिस पे आप खेती करना चाह रहे हैं, ये सॉइल का अभी का कंडीशन क्या है, वेदर यू रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर इन द बिगिनिंग, वेदर यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर इरिगेशन इन द बिगिनिंग, कंप्लीट आप रिमोट सेंसिंग से, ड्रोन से आप कर सकते हैं। तो ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत जोर शोर से प्रमोट भी कर रही है और अब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा भी आया है। आप देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र जहां जहां पे भी है, उस कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन उनके पास अवेलेबल है, उनके पास कुछ सेंसर्स भी अवेलेबल है। ड्रोन और सेंसर से ये लोग पता कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर क्रॉप में जाके पता कर रहे हैं कि आपका क्रॉप का हेल्थ क्या है। इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है आपके क्रॉप का। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा इस बार का क्रॉप का यील्ड क्या होना है, यील्ड सही होगा कि यील्ड खराब होगा, वो पहले पता चल जाएगा आपका। तो वो भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता चल रहा है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम पहले ही बिफोर हैंड हमारा क्रॉप खराब होगा, यील्ड हमारा सही नहीं होगा, तो उसके लिए हमें जो भी कोर्स लेना पड़ेगा, जो मिड कोर्स एक्शन लेना पड़ेगा, हम मिड कोर्स एक्शन ले रहे हैं, तो हमारी पैदावार बढ़ रही है इसके कारण। अगर आप देखेंगे टूल्स इन एग्रीकल्चर, प्लाव मशीन तो सबने देखा होगा, अब पावर डिस्क प्लाव आ गया है, जो कि आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका प्लॉइंग का जो काम है आपका कर लेगा। फर्टिलाइजर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन में जहां जहां पे सीडिंग करना है आपका एग्रीकल्चर के इसमें फील्ड में जाके आप कर सकते हैं, सीडिंग कर सकते हैं। कॉटन स्ट्रिपर्स कुछ लोगों ने सुना होगा और आपने देखा भी होगा। हर्बल फर्टिलाइजर, अब एक नया अभी हम लोगों ने भी एक कंपनी अभी जस्ट इंक्यूबेट किया है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में, जो कि हर्बल बेस्ड फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं वो, और ये फर्टिलाइजर कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है और जो
न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट का, सही मात्रा में पहुंच भी रही है और हानिकारक भी नहीं है आपके हेल्थ के लिए। और इस ढंग से वो कंपनी भी प्रमोट हो रही है, कंपनी अच्छा खासा कंपनी इसमें ये कर रही है, वर्क कर रही है। जिंजर, घर में आपने अदरक यूज करते होंगे, हल्दी यूज करते होंगे, तो वो जिंजर का एक्सट्रैक्शन, अदरक हल्दी का एक्सट्रैक्शन से करके पाउडर मेकिंग है, ये एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग रंग का मशीन अभी अवेलेबल है हमारे पास। पोटैटो हार्वेस्टिंग मशीन्स, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो वंस द आउटकम इज देयर, then you have the paddy harvesting machines, power reapers. Everywhere you see there is a small technologies are being used, very small technologies are being used. कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको पहले क्या करना है, चीजों को मॉडल कर लेना है, मॉडल करके आप 3D प्रिंटिंग मशीन्स होता है आजकल, 3D प्रिंटिंग मशीन्स पे मॉडल को प्रिंट करके देख लीजिए वो अच्छा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देन गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एंड वंस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट गिव्स यू अ करेक्ट पिक्चर, उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल करके आप जाइए उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चले जाइए आप। और लोकल किसी लोकल वर्कशॉप में, लाइक इंडो डेनिश टूल रूम है आपका, झारखंड टूल रूम है आपका, आईआईटीज में डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वर्कशॉप्स होते हैं, वहां जाके इसको डेवलप कर लीजिए। डेवलप करने के बाद एक सेटअप सही बन गया तो इसको पैटेंट कर लीजिए, पैटेंट हो गया किसी कंपनी को जाके पैटेंट बेच दीजिए अपना और जाके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लग जाइए। यही प्रोसेस होता है इसका। जो सेकेंड हम जो आ रहे हैं सेक्टर, जो फूड सेक्टर आ रहे हैं, फूड सेक्टर में अगर आप देखेंगे हमारा डिपेंडेंसीज या हमारा जो एक अच्छा खासा नाम कहां पर है, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट हैं थ्रू द वर्ल्ड। अब कैन वी हैव सम टेक्नोलॉजीज विच विल गिव यू द एंड प्रोडक्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ द मिल्क, बट मिल्क से हम क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर नाउअडेज। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो हमारा डिफरेंट कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन करना है फ्रूट से, उसका पैकिंग करना है, पैकेजिंग, दैन स्टोरेज, दैन उसका न्यूट्रिएंट बरकरार रहे, उसके लिए क्या क्या हमें चीजें करना है, उसमें लॉट्स ऑफ रिसर्चेज हैव बीन डन एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर एग्जिस्टिंग हियर। सीरियल्स एंड ग्रेन्स में हम अभी सेकेंड हमारा रैंकिंग है वर्ल्ड में, तो इसमें भी लॉट्स ऑफ रिसर्चेज, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर एंड लॉट्स ऑफ रिसर्चेज आर गोइंग ऑन थ्रू द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज ऑल्सो नॉट लैगिंग बिहाइंड द वर्ल्ड। Similarly, you have the marine products, जो मछली बोलते हैं, eggs, meats, ये सब है, इस पे भी lots of researches are there. I simply give you 3 different category of technologies examples. One is the technology and equipment, जो आपका end product आ रहा है, उस end product को बनाने के लिए क्या technology equipment लगेगा। Can we apply some robots जो कि automatic packing करे, automatic loading करे, automatic transportation में लग जाए हमारा। Yes, it's existing nowadays. Second one is the पैकेजिंग मटेरियल मशीनरीज, आपका उसका क्या डिफेक्ट्स क्या है, पैकेजिंग में कोई डिफेक्ट्स आ रहा है, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का कंटेंट सही आ रहा है, साइज सही आ रहा है कि नहीं, कलर सही आ रहा है कि नहीं, वेट सही आ रहा है कि नहीं। यस, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू कैन अप्लाई टेक्नोलॉजीज सच एज रोबोटिक्स, AI, ML लगा हुआ है। अपने जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट्स है इंडिया में, अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट्स है इंडिया में, फूड प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया में है, वहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये दीज ऑल टेक्नोलॉजी आर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। गुड थिंग दैट दीज टेक्नोलॉजीज हैव नॉट बीन इंपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स। मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दिया था, इसको मैं थोड़ा सा क्विकली रैप अप कर दूंगा। आप जैसे फूड का देख रहे हैं कि अगर आपका रैपर में रॉन्ग पाई हो गया तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है। कलर विजन सेंसर्स अवेलेबल है, कलर विजन सेंसर्स आपको तुरंत उसका एक रिजल्ट दे देगा कि नहीं आपका पैकिंग रॉन्ग हो रहा है या कंटेंट रॉन्ग हो रहा है इस पैकिंग के अंदर में। आपने सब लोग कोको कोला, बिस्लेरी और ये सब स्प्राइट यूज किया होगा। कभी आपने देखा है कि किसी भी कंटेंट, बोतल के कंटेंट में कलर कहीं चेंज नहीं हो रहा है? You have sensors installed at all picking plant. वो सेंसर्स बताता है कि इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैनुअली इट इज नेवर पॉसिबल। सारा चीज जो है कंप्यूटराइज कंट्रोल है। आपने ढक्कन देखा है कि ऐसा कभी देखा है कि इसका ढक्कन उसमें नहीं लगता है? सारे बोतल का ढक्कन एक ढक्कन दूसरे ढक्कन में लगता है। हाउ इट इज पॉसिबल? इसके लिए भी फिर क्या है कि आपका सेंसर बेस्ड सिस्टम्स है और इसके लिए रोबोटिक सिस्टम है सबका थ्रू आउट द कंट्री देयर इज वन स्टैंडर्ड विच इज टू बी फॉलोड। वो सब सेट किया हुआ है एंड हु विल चेक? यू हैव DVT बेस्ड कलर विजन सेंसर्स, कलर मॉनिटरिंग ऑफ लिक्विड कलर्स एंड देन इमेज प्रोसेसिंग इज ऑलवेज देयर, जो कि आपका बॉटल का डायमेंशंस क्या होगा, ढक्कन का डायमेंशंस क्या होगा, पैकिंग मटेरियल का डायमेंशंस क्या होगा, किस जगह पे पैकिंग आएगा, किस जगह पे उसका कोडिंग आएगा, किस जगह पे बार कोडिंग आएगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, प्री फिक्स्ड। So I just skip this part. Health sector, we have progressed a lot in health sector in terms of development of
technologies. This is the sector which has progressed far ahead than any other sectors in the country which are contributing towards economy. पहला जो ग्रोथ हुआ है हमारा हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है, और उसके बाद जो सेकंड आ रहा है हमारा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर आ रहा है. थर्ड हमारा जो सेक्टर है हमारा फूड प्रोसेसिंग का आ रहा है, एंड फोर्थ वन इज योर अदर सेक्टर्स. माइनिंग अर्थ साइंसेज में बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोथ. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एग्जांपल है लाइक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर. इंडियन टेक्नोलॉजीज, मैं इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा. वी हैव लॉट्स ऑफ पैटेंट आल्सो हियर. द टीबी रिसर्च कंसोर्टियम, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. आपने एक क्लासिक एग्जांपल अभी कोविड का आपने देखा होगा, कोविड वैक्सीनेशन का एग्जांपल देखा होगा, आपका सीरो सर्वे का एग्जांपल देखा होगा, आवर ऑन टेस्टिंग का सेटअप देखा होगा. यस, इट्स आवर अचीवमेंट रादर. देन एलिसा किट्स, जो डिफरेंट डिजीज को चेक करने की जो एलिसा किट्स कार्ड टेस्ट जो आप करते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर्ड एंड रिसर्च्ड इन इंडिया ओनली. There are lots of tests carried out for diagnosis of disease. Blood test है आपका, diabetic test है आपका, heart का different sort of functioning test है, kidney का test है, liver का test है. ये सारे test के different जो setups हैं, different tools and technologies हैं. Of course they are German made, but अंदर का जो बहुत सारा component है, जो इनका software part development का है, ये Indian development है, सारा software development. Radiology and imaging. Yes, in terms of the hardware हम पुअर हैं, बट इसके हार्डवेयर के बाद जो इसका इमेज प्रोसेसिंग का जो काम हो रहा है, ये हमारे बच्चों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर ने डेवलप किया है. और थ्रू द वर्ल्ड वी हैव गिवन द सॉफ्टवेयर्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इमेजेस, प्रोसेसिंग ऑफ द रेडियो इमेजेस विच आर टेकन बाय दिस ऑल डिफरेंट कैमरा, डिफरेंट सेंसर्स, पोर्टेबल हो गया या जो भी होगा आपके पास. इसका प्रोसेसिंग का जो टूल आप कभी आप प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, देखेंगे तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डॉक्टर्स. जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बना के दिया है इसको. एक कंसेप्ट है हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग. ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग हम लोग तो मिनरल एक्सप्लोजन बहुत पहले से यूज करते थे, लेकिन अब ये हेल्थ सेक्टर में भी यूज हो गया है, शुरू होना आ गया है. और इस हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग से अब आपके पूरे होल बॉडी का इमेजिंग, आपका मल्टी कलर इमेजिंग हो जाएगा, और डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेडियंस से पता कर सकते हैं किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, आपके किस कंपोनेंट, बॉडी के किस कंपोनेंट में क्या प्रॉब्लम है. इसमें भी रिसर्च चल रहा है, एंड इट्स ए मोर सॉर्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, मोर सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AIML rather than the hardware part. अब लास्ट एक सेक्टर हमारा जो है इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes आई विल कंप्लीट इज द IT सेक्टर. इन द IT सेक्टर वी आर द लीडर. We are the leader in the world, that you can well see from the revenue what we are generating. We are generating revenue about $200 billion, US billion dollars a year, out of which the domestic revenue generation is hardly $50 billion, and whereas export, we do $150 billion of export throughout the year. In 2021, we generated revenue of $200 billion. इसका मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट कहीं भी कुछ अगर डेवलप हो रहा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम इंडिया. और क्लासिक एग्जांपल कोई बता सकता है? बच्चे लोग में कोई बताओ अपना. अभी बहुत अच्छा सा उसका नाम साम चल रहा है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का, जो कि इंडियन डेवलपमेंट है. UPI, it's very correct answer. UPI is the classic example where we had our own dependencies, और हम अब इसको complete digitalization में चले गए हैं पेमेंट गेटवे का. So if you talk about how mature we are in terms of digital technologies, telecom subscriber in 2020 we have 1154 million users. So now we are in the world's fastest growing network, telecom network, consisting of our own persons. You will be glad to know that about 1.1 billion population, they are using internet, mobile internet in 2021, which is about 79% of the total population in the country. आप कह सकते हैं कि how far we are basically getting into digital technologies, and most of the developments are our own. We are into now 5G researches, and some of the researchers in some of the IITs, they have made breakthroughs. About very soon the 5G technologies will be available at a throwaway price to all of us.
स्टार्टअप्स का हमने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर ही लिया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन स्टार्टअप्स and you did not to be again any sort of there is no requirement of any degree or any sort of diploma or anything to open a company or to nurture an idea or to innovate an idea and then develop a POC of the idea and getting some fund from the government. अगर आपके पास आइडिया आ गया है तो आप बस तुरंत उस आइडिया को तुरंत कहीं जाके लॉगिन करा लीजिए अपने आइडिया को, और लॉगिन कराने के लिए यू नीड नॉट टू वेट फॉर एनीबॉडी एल्स, तुरंत जाके आप लॉगिन कराइए, मे बी इन स्टार्टअप इंडिया में जाके लॉगिन करा लीजिए अपने आइडिया को, या नियरेस्ट आप कोई हब, अगर नियर बाय कोई हब है जो कि टीबीआई का काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का काम कर रहा है, उसके पास जाके तुरंत आप अपने आइडिया को दे दीजिए, एक एनडीए जरूर साइन करा लीजिएगा उनसे, विच इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नहीं तो क्या करेगा, आपका आइडिया का चोरी भी कर लेगा वो ध्यान रखना है। और तब उसके बाद आगे बढ़ते चलिए और आगे बढ़ के आप यू लुक फॉरवर्ड टू बिकम एन यूनिकॉर्न। There are lots of private industries also in India nowadays who are spending millions of the dollars instead of investing in their own companies. They are now trying to invest in the startup companies. ठीक है, 100 स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 100 में 80 फेल हो जाए, बट 20 स्टार्टअप तो ग्रो करेगा। 20 स्टार्टअप में मान लीजिए 2 यूनिकॉर्न बन गया तो इन्फोसिस ऐसा 5 कंपनी और खड़ा हो गया। तो मोस्ट ऑफ दीज top industries globally, they are looking for startups where they can invest as a business venture का हम लोग बोलते हैं, they are becoming business venture nowadays, and through business ventures they try to invest in those startup companies, so there won't be any crunch of the fund, there won't be any sort of lack of the mentorship support. Only thing that आप जब अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्क कंडीशन में कुछ आप सोचते रहिए, और कोई आइडिया बहुत अच्छा क्लिक कर गया कि आइडिया कुछ आगे काम करेगा तो उस आइडिया पे आगे बढ़ते चलिए आप। Electronics, we all are well versed with electronics. Yes, we are a bit poor in the hardware part in electronics. We were dependent on the imports only so far. Now concepts have got changed. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल क्लास 1 क्लास 2 लोकल कंटेंट का एक कंसेप्ट लेके आ गया है, एंड दे वांटेड दैट एनी इंडस्ट्री और एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट्स टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव टू हैव देयर बेस इन इंडिया। और उसमें भी आपको मौका मिल रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। बट यस, वी आर बिट पुअर इन पर्टिकुलरली मदरबोर्ड जो बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर का चिप बोल रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे अपना आप सेटअप्स आ रहे हैं, कंट्री में ऑन सेटअप्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट हियर। आपने सबने तो ये तो देखा है एनपीसीआई और वो भीम ऐप और सबका तो आपने सबको पता है। हमने ये एग्जांपल बता दिया व्हाट वी आर डूइंग एज एन आईआईटी, द रोल व्हिच वी हैड टू प्ले इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन communities as well as technology innovation in our core business area like mining exploration. We have just opened a company in the name of Texmin, and through Texmin we are trying to promote innovation in exploration and mining, and for that there is no crunch of the fund. अगर आपको आसपास में अगर कुछ भी आइडिया लगे जो कि लगे कम्युनिटी के लिए बेटर है या माइनिंग के लिए बेटर है, आप हमारे पास आ जाइए। we will provide you the mentorship support, we will provide you fund also. With these few words, I conclude my presentation. Anybody has any question, will like to respond to those questions. किन्हीं के पास कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है, सब फॉरगेट अबाउट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इस ढंग का कुछ भी स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, इसमें किसी में कुछ है तो हमें बताइए। So I don't think you have any questions. So thank you all for your patient hearing. Thank you, sir. Thank you for the very informative lecture. Sir has shed light on the growth and development of S&T in India and the steps taken by the Government of India for advancement of science and technology, such as research grants, fellowships to students, creation of innovation hubs, Atal Tinkering Labs, the Atal Community Innovation Centers, etc. I'm sure the audience is now more aware and wiser about technological interventions in agriculture, food, health, and IT sectors in India.
Now the time has come to honor our speaker. Now may I request Dr. J.K. Pandey Sahab to kindly present the shawl and bouquet and memento to our speaker. Thank you, sir. Moving on to the next part of this program of today's program. Now we have a science film. May I now request our video team to kindly play the film. In this episode of Science for a Self-Reliant India, we take an in-depth look at India's space program and the achievements of its space agency, Indian Space Research Organization, or ISRO. In less than 60 years, India has become a world leader in space technology and exploration. The program began in 1962 under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai. It was then a part of the Department of Atomic Energy. He thought that here is a very unique technology, a technology that needs high levels of development in terms of capability. It also brings the teamwork culture among the people, and we need to create new institutional mechanisms by which this can be progressed, which are all new to India but very essential for India to take the next step, what you may call as a leapfrogging from the state of lack of development to development. So that is the reason why Sarabhai thought we should have a space program which is more tuned to the needs of India than the Western world, which is already developed. India's vision in establishing the space program is to harness space technology for national development while pursuing space science research and planetary exploration. The track record of India's space agency speaks for itself. Engineers and scientists of ISRO have designed and developed a range of launch vehicles for putting into space indigenous satellites and related technologies for Earth observation, communication, navigation, meteorology, and space science. Important initiatives of ISRO have included development and launch of the Indian National Satellite System, or INSAT, for communication, broadcasting, and meteorology. The IRS, or the Indian Remote Sensing Satellite System series, to support the national economy in areas of agriculture, water resources, forestry. And importantly, the development and operationalization of the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) for launching not only Indian but international satellites into space. Effectively, because the purpose was to see that yes, we can put a satellite in space and control it. That was the purpose. Then we came to applications. Next step was to use it for meteorological applications. So we launched a satellite called Bhaskara 1, Bhaskara 2, mostly for meteorological oceanographic applications. That was the basic starting point of satellite technology for applications. Then we had other applications, IRS, Indian Resources Satellites, then we have INSAT satellites, all those things followed. But these are the very significant satellites that were launched. India has also achieved success in important space exploration initiatives like Chandrayaan, Mars Orbiter Mission, also known as Mangalyaan, and the launch of AstroSat.
But the next few years are going to be even more eventful and path-breaking for ISRO and indeed our country. Preparations are underway for launching a 3-member Indian crew to space for a period of 5 to 7 days and safely return them to Earth. This and much more on our 2-episode series dedicated to India's space program and ISRO as we celebrate 75 years of India's independence on our show Science for a Self-Reliant India, only on India Science. Among the most remarkable achievements of independent India in the last 75 years has been the development of its space program, which started under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai and physicist Kalpathy Ramakrishna Ramanathan in 1962. It was named the Indian National Committee for Space Research, or INCOSFAR, which was renamed in 1969 as ISRO as we know it now. At a time when India is working to send its first manned mission to space, the initial years of our space program stand in contrast. It's difficult now to imagine that India's first test rocket in 1963 was transported for assembly to the launch site in Thumba, Kerala on a bicycle. Preparation for India's first test rocket flight, the US-made Nayak Apache sounding rocket, began with basic resources and a small but dedicated pool of scientists like Puneet E.V. Chitnis, who had left his lucrative job in Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, and a team of rocket engineers, which included Dr. APJ Abdul Kalam, who would go on to become India's president from 2002 to 2007. The Indian space program really took off in 1963 with the launch of the Nayak Apache sounding rockets from Thumba in Thiruvananthapuram in Kerala state on November 21st, 1963. This 2-stage US sounding rocket weighing 715 kilograms reached an altitude of 207 kilometers during the test flight. The launch site, which is now called the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, was selected as it is very close to the Earth's magnetic equator. After 4 years of this launch, on November 20th, 1967, the first indigenously developed sounding rocket, Rohini 75, with a total weight of 7 kilograms and a length of 1020 millimeters and a diameter of 75 millimeters, was launched, and it reached an altitude of 9.3 kilometers. And this was the beginning of the era of Indian rocketry. To accelerate space research, the Indian government reached out to a number of countries for collaborations. These included the United States, the erstwhile USSR, France, the United Kingdom, and even West Germany. The main focus was to procure advanced technical equipment for the rockets such as telemetry receivers, tracking systems, and computers. In return, India dedicated the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, to the United Nations as a goodwill gesture in February 1968. It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR, and France, are collaborating with us at the equatorial range near Thumba. As a result, a number of international launches also took place from Thumba, like the Rohini series of sounding rockets, and a number of foreign rockets like the M100 from USSR, Nayak Apache, Nayak Tomahawk, Ericas and Judy Dart from the US, Centaur and Dragon from France, Suki 1 and 2 and Petrel from the United Kingdom were also launched. Regarded as the father of the Indian space program, Dr. Vikram Ambalal Sarabhai was born on August 12, 1919 in Ahmedabad. Dr. Sarabhai was a physicist by training and attended Gujarat College and then Cambridge University. During World War II, he returned to India and joined the Indian Institute of Science in Bangalore under physicist Sir Chandrasekhar Venkataraman.
In 1945, he went back to Cambridge University to pursue a doctorate and wrote a thesis, Cosmic Ray Investigations, Experiments with Gamma Rays. On his return to India, he founded the Physical Research Laboratory in Ahmedabad. In 1962, Dr. Sarabhai established the Indian National Committee for Space Research, which was later named the Indian Space Research Organization, or ISRO as we know it now. Sarabhai also set up the Thumba Equatorial Rocket Launching Station in southern India. After the death of Dr. Homi Jahangir Bhabha, widely regarded as the father of India's nuclear science program, in 1966, Dr. Sarabhai was appointed chairman of the Atomic Energy Commission of India. Here, Dr. Sarabhai helped develop India's nuclear power plants by laying the foundations for the indigenous development of nuclear technology for defense purposes. Dr. Sarabhai believed that science and technology were important tools to bring development to even the most remote parts of India. He worked on programs to take education to remote villages through satellite communication and called for the development of satellite-based remote sensing of natural resources as well. We had our own visionary who thought this new access for the humanity, for the vantage point of space, could have very unique possibilities for India in view of its development status and in view of the use of new methods of improving the various systems which are critical to the national development and endeavor. So that was the background in which Dr. Vikram Sarabhai, the India space pioneer, thought of possible impact of this new development in the context of the development of this country, especially in the social, economic, cultural milieu. He thought the satellites, for example, when they go around the Earth, they can be used for communication as a tall tower. He envisaged that if the satellites go around the Earth's orbit, it can take pictures of the ground, and those pictures can be used for providing timely, accurate, and precise information. He saw here is a new opportunity for exploring the outer space by sending instruments through the space, to the satellite, to various locations in the space. And thus he thought that here is a very unique technology, a technology that needs high levels of development in terms of capability. It also brings the teamwork culture among the people, and we need to create new institutional mechanisms by which this can be progressed, which are all new to India but very essential for India to take the next step, what you may call as a leapfrogging from the state of lack of development to development. Post-independent India saw the country building capacities in science and technology. The objective was to establish our nation as a world leader in new technologies and scientific knowledge, so that this knowledge and the tools could also be harnessed for development purposes. Now, to achieve these objectives, it was decided to administer various programs like space, atomic energy, scientific research programs in a more cohesive and coordinated way by establishing a full-fledged science and technology ministry in 1971. While in June 1972, the Government of India constituted the Space Commission and established the Department of Space and brought ISRO under it. As a result of this important thrust, the decades of the 1970s and the 1980s marked an important transition in the history of India's scientific and technological journey. The Ministry of Science and Technology was thus established in 1971. The aim was to formulate and implement science and technology policies as well as to streamline research agenda and to establish science and technology infrastructure in the country. Besides promoting international cooperation, the ministry facilitated funding for domestic institutions and research programs. The emergence of the ministry gave a push to the already existing research and development programs in the country, such as the Green Revolution, and helped to give a major boost to some of the new programs and institutions, such as space research and the nuclear program.
Although India's space program owes its birth to the vision of Dr. Vikram Sarabhai, it was Dr. Satish Dhawan who helped transform ISRO into a world-class space organization. Dr. Satish Dhawan graduated from the University of Punjab with an unusual combination of subjects: a BA in mathematics, an MA in English literature, and a BE in mechanical engineering. In 1947, Dhawan left for the United States to pursue higher studies in the University of Minnesota, from where he obtained an MS in aeronautical engineering before moving to the California Institute of Technology, or Caltech, for a degree in aeronautical engineering. Dhawan followed this up with a PhD in aeronautics and mathematics from Caltech in 1951. In the same year, Dhawan joined the Indian Institute of Sciences, Bengaluru, as a faculty member and was appointed its director in 1962. In 1972, he succeeded Vikram Sarabhai as the chairman of Indian Space Research Organization. It was under his leadership that India launched its first satellite, Aryabhatta. His efforts led to operational systems like INSAT, a telecommunication satellite, IRS, the Indian Remote Sensing Satellite, and the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) that placed India in the League of Spacefaring Nations. Dhawan remained the chairman of ISRO till 1984. ISRO's first success came when Indian scientists launched the first satellite into space on April 19, 1975. Named after the ancient Indian astronomer Aryabhatta, the satellite was completely built and fabricated in India and was launched into space by Cosmos 3M launch vehicle from Kapustin Yar, the then Soviet Union's rocket launch and development site. Aryabhatta was built with the aim of gaining experience in building and operating satellites. The satellite weighed 360 kilograms and was also equipped with a suite of instruments to conduct experiments in X-ray astronomy and solar physics. The satellite was designed as a 26-sided polyhedron with a diameter of just over 4.5 feet and was powered by solar panels. In the same year, in August 1975, another indigenous space project called Satellite Instruction Television Experiment, or SITE, was launched by Indian Space Research Organization in collaboration with National Aeronautics and Space Administration, or NASA, of the United States. For the first time in the history of the nation, 2,400 black and white community television sets came alive across 6 states in the country. The SITE experiment, as I said, is Satellite Instructional Television Experiment, was conducted by the Space Applications Center in collaboration with NASA, and the purpose was to make everyone aware of the major advantages of satellite. Because those days, 1975, 45 years ago, it was tough. It was difficult to convince the non-experts or people who are in the administration to spend so much money, whether we should spend so much money for such missions. So there were such comments coming from various places. So Vikram Sarabhai had a very good and correct idea of using satellite for instructional purposes. This was one of the largest experiments of its kind, with the aim of demonstrating the potential of satellite technology as an effective medium of mass communication for a developing country. Educational programs which were made in India were beamed by the Application Technology Satellite ATS-6 of the United States. The SITE project established that the reach and extension of communications infrastructure to remote areas was not only feasible but an important medium which could be used to accelerate national development. Who are the people listening to it? Number one, the farmers. The farmers are getting data about the weather, about various educational programs on how to do the cultivation, what are the various topics to be addressed. That is number one. Number two were the students. We selected about 2,500 villages, 2,400 villages all around the country, and made
one person in charge of that unit, local unit, and we demonstrated that education, or that means classroom teaching, is possible using the satellite. And today all of us know, because of the pandemic, we are going through the instruction via digital method. So this is the one. Long back we had actually we did not anticipate this type of situation, but very effectively we could communicate with very far away, inaccessible places, hilly regions, remote areas, underdeveloped areas. All those things were very effectively reached through this satellite instruction television experiment. 5 years after India launched its first space satellite, Indian scientists achieved another milestone. On June 7, 1979, ISRO launched India's first low-orbit observation satellite, Bhaskara-1, from Kapustin Yar on board Inter-Cosmos launch vehicle. Its mission was experimental remote sensing. It was the first Indian satellite to be put into space for the purpose of studying the Earth, collecting meteorological data, map-making and monitoring of the environment. Between 1970 and 1983, another important mission was undertaken by ISRO to design and produce India's first satellite launch vehicle, SLV-1. The chairman of ISRO, Dr. Satish Dhawan, appointed Dr. APJ Abdul Kalam as project director. The first attempt of SLV-1 was only partially successful. Of course, every program, there will be a technological problems will come in. Our earlier attempt in 1979, we had a failure. The SLV-3 could not inject the Rohini satellite in the orbit. But in July 1980, it was successfully launched and many successes followed. So the first indigenously developed Indian satellite was successfully launched into orbit on 18th July 1980 on an SLV-3 rocket from the Sriharikota Space Center in the Bay of Bengal. Sriharikota is a barrier island off the coast of Andhra Pradesh and was chosen in 1969 as India's second satellite launching station. The island covers an area of over 43,000 acres with a coastline of 50 kilometers. The island's close proximity to the equator, which benefits eastward launches of the rockets, also give an important cost advantage to India for launching satellites. As the Earth rotates eastwards on its axis, a rocket launched into orbit gets extra velocity from the Earth's rotational motion when launched in this direction. As Sriharikota is a large uninhabited island, it is also ideal from the safety perspective, making it an ideal spaceport. It was named as the Satish Dhawan Space Center in memory of Satish Dhawan, former chairman of ISRO, in 2002. Sriharikota is considered by many space experts as the second best located spaceport in the world after the Kennedy Space Center in the United States. First indigenously developed satellite was spherical with a 0.6 meter diameter and weighed 35 kilograms. This launch made India the 7th nation to launch a satellite into orbit on its own rocket. In August 1983, the Rohini 3 communication satellite was launched, and as a result, the nationwide television coverage increased from 20% to 70% of the population by 1985. The successful culmination of the SLV-3 project showed the way for more advanced launch vehicle projects such as the Augmented Satellite Launch Vehicle ASLV, the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV in the years to come. The Augmented Satellite Vehicle ASLV program was designed to augment the payload capacity to 150 kilograms, or 3 times the payload of the SLV-3, for putting satellites into the low Earth orbit. While building upon the experience gained from the SLV-3 missions, ASLV proved to be a low-cost intermediate vehicle to demonstrate the valid critical technologies that would be needed for the future launch vehicles.
In our next episode of India's eventful space journey, we look at the exciting decade of the 1980s when the first Indian wing commander Rakesh Sharma flew into space aboard the Soyuz T-11 with two other Soviet cosmonauts under the joint ISRO-Soviet Intercosmos space program. I, for one, was very young, but I still remember so vividly how Rakesh Sharma described India from space. Let's see. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा. How beautifully he put it. And this was truly a historic moment for India and a turning point for India's space program. Now, since the 1980s, ISRO has transformed itself into one of the largest space agencies in the world with a fleet of communication and remote sensing satellites such as INSAT and the IRS. We have become self-reliant in a host of space applications and, importantly, a range of satellite launch systems which are also used by a number of other nations. So in our next episode, we look at advances made in launch vehicles like PSLV and GSLV, space exploration initiatives like Chandrayaan and Mangalyaan, and of course, the current mission Gaganyaan, under which preparations are underway for launching a 3-member Indian crew to space and safely returning them to Earth. This and lots more on our show, Science for a Self-Reliant India, only on India Science. धन्यवाद इस ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक चलचित्र के लिए। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इस सत्र के सम्मानित अतिथि VECC कोलकाता से श्री JK नायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं समस्त सिंपर परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हमारे वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक JK पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि सर को डायस तक आमंत्रित करें। सर, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, आप कृपया नायक सर का सम्मान पुस्तक भेंट कर करें। It is my privilege to introduce our next speaker, Dr. Jajati Kesari Nayak, to the audience. Dr. Nayak is working in the Theoretical Nuclear Physics Division at the Variable Energy Cyclotron Center at Kolkata. He has completed his BSc and MSc from Utkal University, pre-doctoral from Institute of Plasma Research, Department of Atomic Energy, Gandhinagar, and then PhD from Homi Bhabha National Institute, Mumbai. Excuse me. He joined Bhabha Atomic Research Center in 2002 and then has shifted to VECC in 2003. Since then, he is involved in the study of phenomenology of relativistic heavy ion collisions and quark-gluon plasma. His area of work is high energy nuclear physics. He is actively engaged in research activity and has published many articles in highly indexed journals. He is also reviewer of many journals of national and international repute. He is associated with public awareness activity since a long time. I now request Dr. Nayak to kindly present his lecture.
Good afternoon, everybody. Thanks to the organizer for giving me this opportunity to discuss some of the glorious achievements of India in the post-colonial era. India has many achievements. India's contribution to science is immense. If we count from the ancient period, but we will talk here only, we will focus on the last 75 years achievements or some sort of during the independence era what we have gained. So okay, we have come for a long way, right? Since the days of independence, as a nation, we have many amazing strides in the past as well. So like the post-independence, the pre-independence contribution was also immense. If we basically categorize the achievements, let me put it in two categorizations. One is technological achievements or milestones that we have achieved. And second is basically contribution to science by Indian scientists. One case, the horizon of the knowledge was increased by the contribution of Indian scientists. And second, the technological applications that enriched the basically society or that increased the some sort of comfortness in the way of our life. So there are many sectors where we have achieved a lot. It's very difficult to summarize everything within a limited time, maybe 30 minutes or 45 minutes or 1 hour. So we will focus some of the strategic sectors. When you say strategic sectors, that means basically three sectors we call strategic sectors: Department of Atomic Energy, Space, and Defense. And apart from that, we know we have Ministry of Science and Technology, under which we have several laboratories, national laboratories. So they contribute in a different way as far as technology is concerned. Also, we have conventional energy sector. We have also some achievements there. And most importantly, in the next decades that we will see, also few decades which helped us in several ways, that is supercomputing technology. And also India's contribution to the software sector and contribution to science by Indian scientists. Almost all I will focus 3 or 4 aspects of this. So you know Department of Atomic Energy, it has a famous quote. Quote is atoms in the service of nation. How one atom can serve any nation. Basically we will talk in the context of India, our nation. So atoms in the service of nation. And we know the modern science, that era started around 1900. So roughly 150 years back, modern science basically, the science right now we are studying emerged in this way. And that started, we know there is a subject called quantum mechanics, probably will quantum physics or quantum science, probably you will read, you will study in your future when you take further career leap. So in the quantum science started with the discovery by Planck. So when Planck told or discovered that the energy is not basically radiated or absorbed through packets, which we call quanta. So that is around 1900. After that, Einstein basically came into picture. So starting from 1905 until his death, so Einstein has many theories. Also mostly we remember Einstein because of 3 important theories: Brownian motion and photoelectric effect, and also his famous E equal to mc square. Also another is relativity.
general theory of relativity and special theory of relativity. So these atoms or harnessing atom, how we can use atom for the basically betterment of the human society or our society, that series basically that thing basically came after Planck. So 1900 when Planck gave us the quantum science. Again, so Einstein after that, so gave the famous equation E equal to mc square. Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. So energy mass equivalence. So then some scientific discoveries, scientific steps that helped to basically utilize atom and get energy. So how we get energy from atom, and now how energy is basically occupying each and everything in our life. So right now if the you have electricity and power, you cannot tolerate if electricity goes away for 1 hour. So everything depends on electricity, right? So that energy, how to get that much energy, so that is basically in the in near future, hopefully the nuclear energy will take over. So that's what after the discovery of the Planck and then conjecture the theory given by the Einstein E equal to mc square, that started. So artificial radioactivity, when it was discovered by Curie, Madame Curie in 1931, so then people thought in that direction. Again, the discovery of nuclear fission. Atom contains nucleus, or a nucleus. Around the nucleus there is electrons revolving around the nucleus, that makes an atom. So atom basically, when a unstable atom, large size atom, fragments into smaller atoms, that we call fission. When it fragments, the mass is converted into energy. So that discovery of nuclear fission, right, accompanied by the liberation of large amount of energy, that was discovered by Otto Hahn and Fritz Strassmann in 1938. And the prediction of chain reaction. Chain reaction means if you take so many unstable atoms, so then somehow if you excite one atom so that it goes undergo fission, then all the atoms around it, then how they undergo fission. So basically through a chain reaction, that was predicted and successful. Then Enrico Fermi, who is known as the all-time experimentalist, greatest experimental and experimental still now we know. So Enrico Fermi demonstrated that the chain reaction, nuclear chain reaction is possible. So then people basically started harnessing the atom to get the energy. So construction of what happened then? So that was around 1945. So 1939 the Second World War broke out. So during Second World War, several countries like USA started its nuclear weapon program, nuclear explosives. USA started, Russia started, and several countries started their own program. So during that is basically after these series of events. So artificial radioactivity, discovery of nuclear fission and chain reaction. So then by successful demonstration by Enrico Fermi, so then people started to think the how to get energy from nucleus. Then so US, you might have known the famous scientist Robert Oppenheimer. So he took the leadership. Then first made this nuclear bomb. So nuclear bomb, which USA put on Hiroshima and Nagasaki. So in 1945. So then the whole world community, they thought, okay, let us use this atom for the purpose of peace. So then International Atomic Energy was thereafter founded by United Nations Charter. And in Geneva right now, the Geneva in Switzerland, we have the largest experimental lab in this world. So like you must have heard the Large Hadron Collider. So where people say, so the universe-like situation was created, and baby universe was created in the laboratory in the Large Hadron Collider experimental facility. So that's in Switzerland, Geneva. So in Geneva took the lead role from till now, that time only. So the father of the Indian nuclear energy program, we call Homi Jahangir Bhabha, at that time he basically chaired one of the conference. In that conference,
So people took the decision to use the atom for the peace purpose. So to get how to get energy from the atom in a controlled manner. So the objectives of this IAEA International Atomic Energy Agency. So that objectives are indeed very laudable, and that aim was to exploit the peaceful use of atoms for the benefit of mankind. So 1954 in India, so this India's atomic energy program started. That is because in 1939 Bhabha was in Cambridge. Homi Jahangir Bhabha was in Cambridge. His father sent him to Cambridge to study mechanical engineering. So that is because after studying mechanical engineering, he will come back to India and then took over Tata Steel. Basically, that's what his plan. But Bhabha got interested when met another Nobel laureate called Dirac. When he met Dirac, so he was interested in theoretical physics. Then he started. His father put a condition. You can only his passion was theoretical physics, but he joined there as a mechanical engineer. And so his father told, okay, so you first complete the mechanical engineering, and then if you successfully complete this program, then you will be allowed to do theoretical physics. So Bhabha then joined mechanical engineering department, and then he stood in the first division. In the first division, he successfully completed. At that time, first division is a very big thing. So then his father allowed him to continue theoretical physics. So Bhabha in Cambridge then continued in theoretical physics. Basically, nuclear physics at that time was in the peak. So everybody was favoring nuclear physics. So he did theoretical nuclear physics, and then some experiments in the cosmic ray, like as you saw in this film. The Vikram Sarabhai also was a cosmic ray experimentalist. So Bhabha. So then at that time Bhabha was in the peak of his career, because Bhabha gave 2-3 theory in international community. Bhabha is very well known for Bhabha scattering. So he was not supposed to come back to India, but because of the 1913 World War II, he came back to India. So once he came back to India, by that time C.V. Raman already started the Indian Institute of Science, Bangalore. So he offered the reader position in Indian Institute of Science, Bangalore to Bhabha, and Bhabha joined that position. He did the cosmic ray experiment, but silently Bhabha did the nuclear physics. His own passion, both subjects were passionate to him, but he started nuclear physics program. There he started nuclear, something related to nuclear weapon or nuclear devices. So that was around 1945. So India got the independence in 1947, and then after the independence, Bhabha persuaded our first Prime Minister Jawaharlal Nehru to basically have the atomic energy program. So where we can have some nuclear weapon system also. Also in the to basically get nuclear energy program. So 1954, first our atomic energy program started, and its objective was right now we see there are 3 important things which we know as milestones. Several milestones we have achieved in that sector. One is energy security. So we have built several nuclear reactors where this basically we can get energy from the nuclear fission process, and also we have national security. That means nuclear weapons we have basically devised atom bombs and hydrogen bombs, etc. Also food security. Now huge application of nuclear technology in the food sector. So basically use of irradiation to process foods, seeds, and also accelerators. Accelerators are high-end machines to study nuclear physics and also material science research. So nowadays the kind of chip you are looking at basically find so in different mobiles and different sectors. Basically these are the successful story of the material science research, and accelerator is main part right now, taking the main part to foster that one. So this is the photo of basically Homi Jahangir Bhabha. So so as a nuclear energy security, which is that's why I told in my past that we have different sectors, strategic sector. So Department of Atomic Energy comes under the strategic sector. So strategic sector means India has a strategy, India has a mission to obtain something. So what is right now the mission? That within certain time we have to be self-reliant
in producing the total whole energy. We know the coal is this status of the coal right now maybe around 2050 or something like that. We don't have much coal, so it is running out. So we have to look for alternative sources. Again, we know coal produces so many greenhouse effects, so that's why we should look for alternative energy. So right now India has 21 nuclear power plants, nuclear reactors, so where we get the nuclear energy, so that's operating. So basically 43 terawatt hour power is produced, electricity is produced, and 12 are in the pipeline. So these are basically fusion reactors. So like fusion reactors, India is also doing some research on the energy production from nuclear fusion process. Nuclear fusion process, what is that nuclear fusion process? Like nuclear fission, you break one large nuclei and get smaller nuclei. Nuclear fusion, you basically fuse two small nuclei to get a larger nuclei. So this nuclear fusion process basically that happens inside the sun. The energy that we get from the sun is because of the nuclear fusion process. So the smaller nuclei, they fuse. While they fuse, so because of the binding energy, some sort of mass is mass and binding energy relationship. So the mass that converts into energy, and that energy we are getting. So exactly in the similar fashion, India is also trying to build a fusion reactor. So that fusion reactor, some people say this is artificial sun. So India is trying to build this fusion reactor, but there are several steps. So first step is the research things. So we have in Institute of Plasma Research, that is in Gandhinagar, under also Department of Atomic Energy, they have built a machine that is called, the name of the machine is Aditya. So according to the name of the sun, Aditya. So what the Aditya does is basically, Aditya basically confines the plasma. What is plasma? Plasma is basically ionized gas having certain criteria, so eligibility criteria ionized gas has, then we can call it plasma. So it has plasma, and then plasma that there is mechanism to heat the plasma, increase the temperature. So then inside the plasma, there are ions and also electrons, so basically nuclei and electrons. So then when the temperature is much more, then the lighter nuclei will fuse together, and then they produce energy. So Aditya, and then so basically using electric field you can create plasma, and using magnetic field you can confine the plasma. Otherwise immediately that whole plasma will lost to the wall. So it's a very difficult technology, but India has Aditya for a few millisecond, around 900 millisecond right now. They have the system, an advanced system called SST1. They create and confine the plasma. And next is SST2, that is basically they are using superconducting technology, SST2. So then next step is making to another one more step is there, and after that India probably would try to build this fusion reactor. Once fusion reactor is possible, so any country can, so India is at par other countries like USA, China, etc. And probably China is a little bit ahead right now, but European countries and India, so they are at par almost all. So this basically fusion devices, thermonuclear fusion devices. So you might have heard some name in the newspaper called IITER, International Thermonuclear Experimental Research. Basically, that is the step, just one step before making the fusion devices. So once you have the fusion reactor, so probably permanently you will solve this energy problem. So you don't have to depend on any other things, because this fusion reactor, the ingredients are basically deuterium and basically hydrogen, deuterium and tritium. So deuterium you can get plenty amount from the seawater. So that's why you don't have any raw material problem. So then you can get energy. So basically so since there is no raw material problem, so you can get energy for long years. So there will be no crisis in future. So that's basically stays a nuclear fusion project. So India is also right now a part of the international collaboration called ITER project. So that's basically fusion research. And then this is also one of the energy sector part of the Department of Atomic Energy. Another is national security. So national security means so how to basically safeguard our country. So when we say national security, so there are countries around us which give threat continuously. So we have to be self-reliant in nuclear
explosives. So that we have already you know that in 1974 and 1998 we have two nuclear experiments basically for the nuclear explosives. So 1974 that operation during Mrs. Gandhi's period. So Buddha smiled. And again, Buddha again smiled. So that's what is our Pokhran 2 test. So Pokhran 2 test 1998. So that's what basically part of the national security. Another important national security is nuclear submarine. So one of the 5 nations in the world to launch a nuclear submarine. India secured a spot among the only 5 nations to have launched nuclear submarine by the name INS Orihant. So this India's first step towards establishing a dominant position in all 3 domains. INS Orient is a 5,000 kilometer range submarine. The completion of successful of deterrence patrol of this indigenous INS Orient, that was in 2018. So now India is one of the 5 states: United States, Russia, and UK, and France and China, and then India. So have the nuclear submarine. It's a very difficult technology. So that's what is basically national security plan. So these are the achievements, milestones. So these are big technological developments. So you can say these are marvels. So it's very difficult to achieve those situations. So next one is basically food security. Food security means we know 30% of the food production in India. So that's wasted. So we don't have much refrigerating system, or you can say local level we do not know how to keep those vegetables, etc. So the full food materials were spoiled. So 30% of the food materials generally spoiled in India. So food security, basically VRC has developed irradiation technology. So for preservation of fruits, lychee, mango, cherries, etc. vegetables, they preserve it. So basically irradiate, they irradiate with basically gamma, means photon, and then they break the basically some sort of DNA of this bacteria, etc. So that and sometimes also the fruits seeds they irradiate and process, so that it would one can keep it for a long time. So seafood, spices, etc. many of these technology are available also in commercial domain. 34,000 tons of produce has been processed through irradiation till 2015, and irradiation processing plants are in Wasi, Mumbai, Nasik, etc. And irradiated mangoes are generally exported to USA like this. Okay, so this is a photo of the nuclear reactor. That's what I was mentioning. This is a reactor in Kudamkulam. Recently, a few years back, it's started. So this is a reactor, nuclear fission reactor, where we get energy. So apart from these energy sector, food sector, and nuclear technology, another sector. So that we have the milestones achievements. That is basically medical treatment. So medical treatment in the cancer treatment. All the machines in the hospitals that you see in the X-ray machines, cobalt-60 machines, that are basically all the permissions, etc., and controlled by the Bhabha Research Center. That is a division called section called AERB. So that controls that one. So medical. So around 6 lakh patients investigations are carried out annually in India with the help of nuclear technology. Remember, all these technologies are developed indigenously. All these technologies are developed indigenously. So 6 lakh patients investigations are carried out annually, and if you relate a span over 500 centers across the country that are benefiting from using radiopharmaceuticals. Nowadays, so diagnosis purpose also you use radiopharmaceuticals. Somewhere some problem, you have some problem in the liver, some problem in the kidney. So then you inject a pharmaceutical, and that will go and stop there and give some imaging, and that you will know that this portion of your body is basically affected. So so regarding again radiation therapy, as I have mentioned, so there are more than 270 radionuclide therapy units which are currently operating in 62 cities in India. So these are the status. Then one has to enhance this model across various locations.
So teletherapy medicine, also known as Bhavatron, has been designed by Bhavatron Research Center, that is operated. So Bhavatrons are installed at about 50 cancer hospitals in the history. So wherever you see a cancer hospital, so basically this radiation part is controlled by Bhavatron Research Center, Department of Atomic Energy. So this is one of our cyclotron in our center. That name is Cyclone 30. It produces radioisotopes and gives to the hospital regularly. These are technological marvels. So again, this is another experimental facility which is called cyclotron. One thing I have mentioned, that also we have many accelerator facility. Accelerator is a high-end technological devices. So these things you cannot get in industry. It's very difficult, highly expensive and highly technological challenges. So at industrial level, it's very difficult. Till now, it's not possible. So these accelerator India has many accelerators, like accelerator center in Indore. In ours, one is also accelerator center. So cyclotron, synchrotron, these kind of machines you must have heard. These are machines. These machines are immensely useful to the society for the experimental, the research program, for the application oriented program, etc. These are things. And this is the Aditya that I was talking, the plasma confinement device, which is one step to achieve this experimental nuclear fusion program, Aditya at IPR, where they basically create the ionized gas or the plasma inside the chamber in a torus, like a cycle tube like a chamber. It's in bigger in volume, and then confine using magnetic field. So this is the Aditya. And then next stage was SST1. These are some glimpses. One can have some idea, just to some motivation. One can have some motivations. And then there's like this Department of Atomic Energy, we have several marvels. Similarly, you know already, you have seen the movie. In the space program also we have several marvels. The space program or the atomic energy program, so that started almost at par in the similar time during the just after the independence. So Vikram Sarabhai again was in Cambridge. So he also came back to India during World War II. So 1939. So that just basically World War II was some sort of beneficial for India, because all these great minds came to India and then they remain in India. So although our political community also approached them to be in India and contribute in India immensely. So space research activities were initiated in our country in the early 1960s, and then at that time, space research was basically experimental at experimental level. When you do something at experimental level, always people ask questions: what is the societal benefit? What is the societal benefit? So always, if you ask the same question to the discoverer or the electron, who discovered electron very fast. So let us say when the Crookes developed this Crookes tube, or the J.J. Thomson and give his his model. At that time, if you ask them, why are you doing that? What is societal benefit? Probably they could not have an answer. They could not answer that question, or they didn't have an answer why we are doing this question. They were doing for their curiosity. And nowadays you see whatever the machines like Xerox machines, etc. Everything is based on the photoelectric effect, or the somehow electron is used. So when we are doing research in some topic, you do not know when you will get the actual end user benefit. So 1960, when the space research program was basically there, USA definitely was advanced in that position. So USA developed one satellite, that is Syncom 3. That satellite basically transmitted the Tokyo Olympic then. So the Tokyo Olympic game that transmitted, and then Vikram Sarabhai basically was somehow very much convinced. First, you have to convince yourself that this is good, and then you have to go to then you will go to convince others. So first, he was convinced no, space technology is definitely will be helpful for India or any nation in future. Otherwise, Vikram Sarabhai is a cosmic ray physicist. Why he would show his interest in this one, the space application program? So then he persuaded Jawaharlal Nehru and Bhabha. Both Bhabha and
Vikram Sarai, they are really two giant leaders. There are two things. One is great scientist, another is great scientific leaders. Great scientist, basically whatever he does by his own, for example, own curiosity, etc. And what he does, that is one kind of marvel. But great leaders always, great scientific leaders always create a generation of scientists. So Bhabha and Sarabhai, you can put in that category. They created a generation of scientists. So that in future, you can say they created some machines where scientists can be created. So and that's what is scientific leadership is called. So Sarabhai, then after that 1960, so Sarabhai himself was convinced and envisioned that the resources in space have much potential in future to address real problems of man. And then by that time he was the director of the physical research laboratory. Physical research laboratory is in Ahmedabad. So physical research laboratory is one laboratory which gave birth to two institutes. One you can say organization and one institute. Institute of Plasma Research also developed from that institute, PRL. Also so whole ISRO was developed from PRL. So Vikram Sarabhai was the director then. And then Sarabhai took a army of brilliant scientists, also anthropologists, communicators, and then social scientists. You need social scientists because they are the person who will convey others. Yes, we are using the money for the research that is really worth. So then Vikram Sarabhai basically spearhead, took the leadership of the space activities. Indian National, first name of the ISRO was basically Indian National Committee for Space Research in COSPAR. So that was set up in 1962. You see, it was started in 1962 and officially ISRO was established in 1969. In 1969, you can say 1970. 1970, right now it is 2020. So 21, 22, let us say 2020. So within 50 years, India is, you can say, at par of any country as far as space research is concerned. You can compare with NASA, India. So there is no problem. So I will give their success stories. So what ISRO has done till now. The government of India constituted the Space Commission in 1972. And then since inception, Indian space program has orchestrated well and had three distinct elements such as satellite communication, remote sensing, and space-based transportation system. If you basically to convince the Indian normal political community and others that yes, space research is a very important research. At that time, they struggled a lot. So first, they launched a Krishi Darshan program. That was the first program by the ISRO at that time. At that time, ISRO didn't have much facilities, so they used to take the help of USA, etc., USSR, etc. And then they first tried to convince the general people and also political class through the Krishi Darshan program. Yes, this is a program which can benefit the society. And then and next level, so they have different kind of systems. Let me skip some of these things because of the So after that, we have first Indian spacecraft. So before that, we use the spacecraft of other countries, but first Indian spacecraft was Aryabhatta, and was developed and that was launched using Soviet launcher. Spacecraft was developed by in India, but launcher was Soviet launcher, and then SLV-3. So then with a capability of 40 kg. So that is a very low Earth orbit, near to at a low height to the our Earth that was placed, and then so multi-stage rocket system was developed by ISRO. So this you can say one technology, one step to another step is a gigantic step. So those attaining technological that step is very difficult. I will tell some of the things in right now the latest experiments that whole world is engaged, how the technological challenges are there. So things. So if we basically categorize whole achievements of ISRO, we can categorize in three things. One is ISRO's mission, spacecraft, and launcher. Mission is basically several mission like Mars Orbiter mission, MOM. You know this is very famous. AstroSat, GSLV, PSLV, F10. So these are the missions. You know when MOM was
Mars orbiter mission was launched, so it was successfully done. So some people try to argue that why India spent that much amount of energy. So because of the MOM, we don't get any benefit to this. So there is no benefit to the society. So this kind of absurd question sometimes comes. The scientist has to face those questions, and because obviously this is taxpayers' money. So but this is a technological success nobody will believe. So these technological developments, the kind of technological challenges the scientists faced at that time, so that technology will help in future. So that simple example is that nowadays you are using internet, right? So www. So the promise is World Wide Web. The internet was developed. You don't know why the internet was developed basically in the CERN laboratory, this Geneva, Switzerland, the CERN laboratory. The physicists, when they are working with the Large Hadron, Super Proton Synchrotron project and Large Hadron Collider project, so basically to do the high energy experiments, nuclear experiments, they have so huge data. How to transfer the data from one system to another? You know, earlier there were floppies. So after that CD came. So floppy CDs and those things, CD by that time was there, but so the huge amount data one cannot carry. So from one computer to another computer, they just try to develop some kind of numerical programming so that they can transfer the data from one system to another system. So World Wide Web. That fellow was a postdoctoral fellow. That means after PhD in people goes for postdoctoral positions. He was a postdoctor in physics in CERN laboratory. He tried to develop some methodology so that we can transfer the data from one system to another system. And then he developed this World Wide Web. He is the inventor of the World Wide Web. But unfortunately, he didn't get the job also. He was the inventor of the World Wide Web. So you see the whole world is using that internet. The first inventor of the internet, but he didn't get a job. So obviously sometimes that situation arises. So you see, the whole aim was not to develop the internet or to discover how the internet is working, a system is working. So their purpose was something different. But some technology emerged. Now the technology is changing the whole world, controlling the whole world. So similarly, the Mars orbiter mission, so the kind of technologies ISRO scientists developed, like the kind of image processing, the kind of, for example, material development. So you are taking your spacecraft to the outer orbit. You do not know what is the temperature. You do not know what is the temperature of the temperature. Temperature at high end means how hot is the pole of the or the portion of the Mars. You don't know how cold is that portion. So you have to build some kind of metal which can resist high, you can say high temperature or hotness or also coldness. So that kind of challenges is always there in while developing any kind of technology. So both cryogenics, you can say. There is a challenge in cryogenics, there is a challenge in image processing, there is a challenge, so many unknown things are there. We do not know the nature. Nature is nature is always mysterious to us. Always there is something to explore. So that's why always technological challenges remains, challenges are there. So that's why Mars orbiter mission is a marvel. But unfortunately, some people always raise some question. That's why they put the question: what is the societal benefit of this? As a scientist, I would say these are absurd questions. A second thing is that mission is a part of the ISRO's program. Second is spacecraft. So ISRO launched several spacecrafts. So for the purpose of communication, Earth observation. So Earth observation means when nowadays you see after 10 years back, 20 years back, you do not know. So we know. So to predict the cyclone is coming. The prediction always fails. So when the cyclone comes, so the what would be the velocity of the basically typical airflow? So whatever the prediction is there, that fails always. But nowadays you see to what extent, to what accuracy the prediction is. That is because of the satellite. So the Earth observation is a part of that. So the satellite, so spacecrafts are communication, Earth observation, navigation. Now you see India has GPS. You do not know the GPS have. So GPS is an example where basically of the general theory of relativity. So it's technologically it's a topmost challenging things to find the GPS accuracy, because you have to
take the position of several astronomical objects to find the GPS one. So GPS navigation is one of the important part technological in the spacecraft. Also space science. This is purely experimental thing. So space science. So these are the part of the spacecraft. And last one is launcher. So launcher, ISRO had developed PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. So basically for the satellites which is placed near the pole of Earth. Similarly, geosynchronous satellite launch vehicle, which are basically some sort of geosynchronous or geostationary. Sometimes satellite moves exactly with the same speed as Earth rotates. So again, sounding rockets, scramjet engine, that is the latest one ISRO developed, and reusable launch vehicle. Once launch vehicle went, and then it can be reused again. So like you have heard in Mahabharata sometimes the Arjun or Karna. So some sort arrow they shot, and that again killing this enemy that came back, right? So exactly same. You reuse all those rockets you are sending, but then how you can reuse? So ISRO demonstrated its capability of handling complex missions, right? So that is a record: 104 satellites on a single rocket. 104 satellites in a single. No other countries have made this possible. So these are thing. If you little bit think what they have done, these are marvels. These kind of achievements, you can say these are unique achievements. And also ISRO launched country's heaviest rocket, that is GSLV Make 3, whose cryogenic engine was developed indigenously. And MOM mission, Mars Orbiter mission. So India is the only nation in the world to reach Mars orbit in the first attempt. No other nation did it. In first mission, everybody failed, but India is the first one. So I don't know. So they again Mongolian and everything we have there. So he is the Radhakrishnan is the one of the key person behind those MOM mission, etc. So obviously the pioneer was the brainchild of the MOM mission is Radhakrishnan, and also we have also another lady scientist who is contributed immensely. So let me skip some of these things. So we know Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2. So those things you know very. So scramjet engine is basically this latest engine. So rocket engine, ISRO has developed something. So they take the atmospheric oxygen and use with the fuel. So this is also one kind of top technological challenge they have solved. Technological problem they have solved recently. So this is the recent one. So okay, GPS that I mentioned. Okay, so in a summary, ISRO has launched 114 spacecrafts starting from Aryabhata in April 1975. That is I am taking our contribution. I am taking other countries' contribution. So 1975 till February 14, 2022, when everybody was basically observing Valentine's Day, ISRO was launching the latest satellite. So right, so using the scramjet engine. Right, so 114 spacecrafts and 5 and 6 types of launchers, several missions. Obviously, how these space programs helped our broadcasting system, communicating system, like your all the technology, 5G, 4G, whatever technology you say in your mobile technology, and weather forecast, disaster management tools, geographic information system where you can get some sort of mining material, etc. So cartography, navigation, telemedicine. Nowadays telemedicine, in future telemedicine is going to change the role of basically health system. The poor remote people from remote area, they will get the facility, healthcare facility through the telemedicine. So those are possible because of the satellites. So obviously you might have known that we have also one 18-year-old candidate in Tamil Nadu, Raifat Saruk. So he basically created a history by designing world's smallest satellite. So that is obviously, so NASA recognized him, and he is now collaborating something with NASA. So similarly, like ISRO, another space, DAE and space. I will summarize within 5 minutes. Okay. Okay. So now I'm one slide. Just I am telling. Yeah. Good, at least. Yeah.
So DRDO also, that is another strategic sector. They have developed numerous things, right? So Agni, Prithvi, etc. The series of missiles, Tejas, the supersonic fighter aircraft, Akash, and also BrahMos. To what extent it is powerful. Also, they have recently developed an unmanned aerial vehicle. So Sanjay Netra, we call Sanjay Netra means in Dhritarashtra, used Sanjay to see the whole Kurukshetra war. So that's why is unmanned vehicle. Sanjay Netra used to stay in the control room and then observe what is happening in the battlefield. So you see here the Radhakrishnan and missile man, our former beloved president APJ Abdul Kalam. So and another contribution in software sector. I am not talking of software that your mobile applications you are used. I am talking of globally how India contributed to the software sector. India is one of the greatest hubs for information technology services. Out of top 20 best IT technology companies, India has 5 Indian companies like TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, SL Technology. Apart from these 5 companies, so we know how many Silicon Valley in USA, Silicon Valley, how many software engineers are there. So these are the definitely India's. And another good, interesting story that let me narrate is regarding our supercomputing technology. So maybe in the next 20 or 30 years, the supercomputing technology basically will dominate the whole world. So India has invested right now in quantum computing and supercomputing technology in huge amount of money. So when in 1974, on the first Pokhran 1 test was done during Mrs. Gandhi's period, so so USA has a very speculative eye on India. So around 1980, so India needed a supercomputer for various applications. Computers are used for your medical applications, etc. So numerical calculation things. So when India basically made a deal with a company called Cray, so to build a supercomputer. So at that time what happened? So deal was finalized, everything. So few months went, and suddenly Cray told that I will not give you this technology. So or I will not give you the supercomputer. So but that was basically purchase deal. That was not making it, it is a purchase deal. So when USA asked that why you are no, our government doesn't want. That means since the industrialists also are sometimes, companies are sometimes, they have to listen to their government. So USA denied the Cray company, and Cray company denied, we won't give you the supercomputers. So then, that is around 1980s. So India badly needed the supercomputer. So to develop the supercomputer technology, so one institute was basically developed, Center for Development of Advanced Computing, CDAC, that is in Pune right now. So that institute took the challenge to build the supercomputer and took years to build the supercomputer. And first supercomputer we built, and that was built by the father of the supercomputing technology, you can say, for supercomputer in India is basically Dr. Vijay Pandurang Bhatkar. And we are fortunate, sometimes we sit with him, with Dr. Bhatkar. So he is the founding father of the supercomputing technology. So when he made the supercomputing technology, then the question is what kind of name we should give the supercomputer. Sometimes people give the name. So then again people, since the son who made the supercomputer or took the leadership to make the supercomputer approached him, then he also thought, when we look for some solution, sometimes we go for the Sanskrit. Then they go to the what should we give? So then Param was because Param means ultimate. So that's the ultimate. So since maybe some sort of ultimate in calculation that supercomputer does. So that's what Param was, the name was chosen for that superconductor. So Dr. Panduranga Vijay Bhatkar was the father of the supercomputer and that supercomputer technology. So it was good, USA denied. And India built the supercomputer, I think 1/10th price of the purchase deal. Less than the 1/10th price of the total 1/10th of the whole price purchase bill. So less amount of money. And then right now India has the latest supercomputer technology, this Paramasiddhi AI, so artificial intelligence technology there. So according to this press, this is top 500 list supercomputers across the globe. This one is within top 100 list, this Paramasiddhi AI.
So this is also powerful superconductor India has. Also many places we have IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IISER Pune. So there are many places we have supercomputer, Bhabha Atomic Research Center. Now why USA didn't give that superconductor? USA thought India will use this computing facility to basically make its nuclear weapons. So that's why USA denied. But right now we have our supercomputing facility. So then we know, of course, this 1998 again this Pokhran 2 was there during Honorable Atal Bihari Vajpayee's period. So India has the second nuclear test. So now, these are the nuclear marvels that, technological marvels we have obtained. There are several sectors. CSIR has developed numerous technologies which are immensely, basically helpful in your day-to-day life. So similarly, contribution in scientists to Indian, I will take two more slides are there. So like you cannot count down. So there are so many people. Unfortunately, this is for the students. Unfortunately, you do not know who are the Indian scientists took a lead role or took kept their footprint in the global scenario. You don't know, because if somebody asks you to name 5 scientists, almost definitely you should say on Einstein. So you will take all 5 scientists. Those are from abroad, but not a single scientist from India. But there are several scientists in India whose capability was you cannot simply compare, like Jagdish Chandra Bose. Jagdish Chandra Bose, 2-3 theory he has given, the experimental things they have done, like this. Right now, all mobile technologies, these communications, the millimeter wave communications and microwave communications, basically are by Jesse Bose, which Marconi, although Marconi got the credit at that time, Marconi's grandson came to Kolkata, Basu Vigyan Mandira, his Jesse Bose Institute, and there he wrote in this book that yes, this was the, although my grandfather got the credit, but this is the contribution of the Jesse Bose. That is, initial contribution is from this Jesse Bose. Jesse Bose was a highly patriotic scientist. He at that time fought with this English people that he didn't take the salary, etc. In the Calcutta University, there is a parity in the salary with the English speaking, English, British scientist, British physicist, and also Indian one. So that's why he revolted that one. But Jagdish Chandra Bose created Meghnad Saha and S.N. Bose, etc. So then Meghnad Saha, is very famous for Saha equation. He didn't get the Nobel Prize. That is because he was Indian, mostly Indian, because Saha equation is a very famous equation. And although the Nobel Committee, the kind of answer gave, it is not a, this equation doesn't change the life of the basically human beings. That's why we won't give this Nobel Prize. But that is not the logic, because many people got similar kind of exploring similar kind of equation, similar kind of discovery. So another S.N. Bose, if you divide the whole world, 50% is fermion, 50% is boson. Like when Higgs boson was discovered, there was a debate also at that time. So that is named after the Satyendranath Bose. Boson is Satyendranath, because S.N. Bose wrote a paper, marvelous paper. So he gave a statistics to the particular set of particles. Those are called bosons, and he sent Einstein to read it and give comment. And when Einstein read, he wrote, "It's a marvelous piece of work. So you should communicate and publish it." He told that, okay, if you can translate into, at that time the publication journals were in that language, German language. So you can translate into that language and publish it. It would be very helpful. The Einstein translated that part and gave some suggestions. So that's why it is known as Bose-Einstein theory. Bose means that is S.N. Bose, not Jesse Bose, Satyendranath Bose. So we know if you divide the whole universe, 50% is fermion, 50% boson. So the rest boson is named after the S.N. Bose. Similarly, many we know C.V. Raman, we know Bhabha, Sarabhai, Subramaniam Chandrasekhar, K.S. Krishnan, Visvesvaraya, P.C. Mahalanobis, many contributed immensely in the. I am talking of global scenario. I am talking of the Indian scenario. Contributed. So this is basically, I am talking in an era either during independence or post-colonial era. And if we go back to our ancient history, then there are innumerous examples how India contributed. So thank you very much. So again, Fibonacci numbers is a latest number. It is used in right now in computational system. It will be used. So that was again much by ancient times we have used. So thank you very much.
It's okay. Thank you, sir, for the very detailed account that you have presented on the advancement of science and technology in independent India and India's supercomputing, quantum computing program, and the contribution of brilliant scientists and eminent researchers of the Indian researchers of the past. I just, sir, I want to, with your permission, I want to add the name of another scientist who is not known, not even in India, because of certain political things. He is the father of in vitro fertilization, Dr. Subhash Mukhopadhyay. Basically, he independently propagated, or you can say the created the first in vitro fertilized child in India, which is just 67 days after the first in the world. Basically, he did not. Yeah, in Kolkata, one doctor he's discovered the virus when the cholera was there. Sir, that sir. saved the millions of lives and people. Sir, but due to various, you can say, I'm not going into those details, but various things, not even Indians are not aware of his contribution. Anyway, may I request the audience to give a big hand to Dr. Nayak for the brilliant and presentation. And now it is the time to honor our guest with shawl and memento. May I request Dr. J.K. Pandey, sir, to please do the honors. Thank you, sir. With this, we have come to the end of the program. All the activities scheduled for day 3 of this Vigyan Sarvatra Pujyate program. Thank you. थैंक यू जय दीदी, आप बहुत लंबा कितना